मैंने नहीं देखा शुभम, क्यों नहीं देखा पता है? क्योंकि मेरे पास ना मैंने कभी, मुझे नहीं पता मैंने कब, लेकिन वो डिलीट कर दिया था। एडमिट कार्ड नहीं मिला मुझे। विदाउट एडमिट कार्ड मैं कैसे देख पाऊंगी? तुम अपने चैनल पे पोस्ट करो ना, वहीं से देख लूंगी। ऐसा भी साइट नहीं पता है, होगा ना? नहीं, वो तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं ना। वो तो लिखने से आ जाएगा गूगल पर, इतना टफ नहीं है। पता नहीं मुझे दूसरों की लाइफ में क्यों इतनी ज़्यादा उंगली करनी। कोई पास हो या फेल हो मुझसे क्या है ना, लेकिन फिर भी पता नहीं चुल मचा रहता है मुझे। अपना तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ। इसे करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ, वो अलग बात है। ये हम लोगों का स्लॉट 4 होगा। वन 150। Hi Pittar, is it Pittar? I don't know how to pronounce it. Pittar Gamit. Hi, you are not listening. Am I not audible? चलो पढ़ते हैं, 4th स्लॉट है। ओके, शुभम तो भाग गया, पता नहीं इसको रोना आ रहा होगा रिजल्ट के कारण। हाय कुणाल, हाय सर्वजीता, हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करें? तुम लोग यस बोल दो, मैं चली टाइमर ऑन कर दे रही। बस तुम बोलो। कैसे हो? मैं बढ़िया। प्रीतम पीतर, इट्स पीतर। Nicotine addictive chemical present in tobacco. Nicotine, it's nicotine. Stimulates adrenal gland. Nicotine stimulates adrenal gland to release adrenaline and non-adrenaline into blood circulation. Which release adrenaline and non-adrenaline both. Nicotine adrenal gland to release adrenaline and non-adrenaline blood circulation. Heartbeat rate and blood pressure. Raise blood pressure and increase heartbeat rate. Okay. Increase incidence of coronary artery disease, lung cancer, throat cancer, emphysema, urogenital. Is it urogenital? Urinary bladder. It's urinary bladder. Lung cancer, urinary bladder,
throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcer. Gastric ulcers, okay, there are 7. Lung cancer, emphysema, coronary artery disease, throat, bronchitis, gastric ulcer, urinary bladder, gastric ulcer and 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 urinary bladder. गास्ट्रिक अल्सर किसी ने रात को सब पगला जाते हैं, पता नहीं क्या लिखा उसने, मुझे नहीं पता. 2 आवर सेशन नहीं है अभी, 1 आवर ही है, 60 मिनट वाला. मैंने ध्यान नहीं दिया. ओके ओके. नहीं, उसने 2 ही लिखा था, मुझे दिखाई दे रहा है उसका मैसेज अभी भी. पित्तड़ का. लेट्स स्टडी. सर्वजीता हम लोगों के साथ पढ़ना. ओके, मैं स्टार्ट भी कर रही है ये टाइमर. ठीक है, पढ़ते हैं अब. चलो. ओके. Lung cancer, bronchitis, emphysema, coronary artery disease, urinary bladder, cancer of lungs, urinary bladder, throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcer, etc. Cancer of lungs, urinary bladder, cancer of lungs, urinary bladder, throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcer, cancer of lungs, urinary bladder, throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, and gastric ulcer. Okay. Carbon monoxide contained in blood, which decreases the oxyhemoglobin, reduces the concentration of heme-bound oxygen. Heme-bound oxygen को के अनुसार concentration decrease करेंगे. Adolescence and drug alcohol abuse. Adolescence means both a period and a process during which a child becomes matures in terms of his/her attitude and beliefs for effective participation in society. The period is from 12 to 18 years of age. May be thought of as adolescence period. In other words, adolescence is bridge linking childhood and adulthood. Adolescence is a bridge linking childhood and adulthood. Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. Adolescence biological change हुन्छ अनि के हुन्छ behavioral change. Biological and behavioral changes. Adolescence thus is a very vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. Mental and psychological development of an individual. 13 साल के ही तो थे. 14 years. Adolescence thus is a very vulnerable phase of mental and psychological development. Adolescence thus is a very vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. Curiosity, needs for adventure and excitement, and experimentation constitute common causes which motivates youngster towards drug and alcohol use. A child's natural curiosity motivates him or her to experiment. This is complicated further by effects that might be perceived as benefits of alcohol or drug use. This is complicated further by effects that might be perceived as benefits of alcohol or drug use.
might be perceived as benefits. Thus, the first use of drugs or alcohol may be out of curiosity or experimentation. First use of drugs or alcohol may be out of curiosity or experimentation. Curiosity or experimentation, thus, the first use of drugs or alcohol may be out of curiosity or experimentation. But later, the child starts using this to escape facing problems. Thus, the first use of drugs or alcohol may be out of curiosity or experimentation, but later the child starts using this to escape facing problems. Of late, stress from pressures to excel in academics or examination has played a significant role in persuading the youngster to try alcohol and drugs. The perception among youth that it is cool or progressive to smoke, use drugs or alcohol is also in a way a major cause for youth to start these habits. Television, movies, newspapers, internet also help to promote this perception. Other factors that have been seen to associated with the drug and alcohol abuse among adolescents are unstable or unsupportive family structure and peer pressure. Addiction, okay, this is adolescence and drug alcohol abuse. Okay, ये important भी नहीं है, मत पढ़ो इसे. Addiction and dependence, because of the perceived benefits, perceived benefits क्या होता है ये, कोई बात नहीं. Because of their perceived benefits, addiction and dependence, drugs are frequently used repeatedly. The most important thing which one fails to realize is the inherent addictive nature of alcohol and drugs. Inherent addictive nature of alcohol and drugs. Addiction is psychological attachment to certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being associated with the drug and alcohol. हाँ तभी तो addiction. Addiction is a psychological attachment to certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being associated with the drugs and alcohols. Alcohols. These drive people to take them even when these are not needed. These drive people to take them even when these are not needed. People to take them even when these are not needed. Okay. These are not needed. Or even when their use becomes self-destructive. Okay. With the repeated use of drugs, the tolerance level of the receptors present in our body increases. With the repeated use of drug, tolerance level of receptors present in our body increases. With the repeated use of drugs, the tolerance level of the receptors present in our body increases. Consequently, the receptors respond only to higher doses of drugs or alcohol, leading to greater intake and addiction. However,
It should be clearly borne in mind that use of these drugs even once can be a forerunner to addiction. However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs even once can be forerunner to addiction. Ayya. It should be clearly borne in mind that use of these drugs even once can be forerunner to addiction. Thus, the addictive potential of drugs and alcohol. Thus, the addictive potential of drugs and alcohol. Addictive potential of drugs and alcohol pull the users into vicious circle leading to their regular abuse from which she may not be able to get out. In the absence of any guidance or counseling, the person gets addicted and become dependent on their use. Okay. Thus, the addictive potential of drugs and alcohol pulls the user into a vicious circle leading to their regular use and abuse from which she may not be able to get out. In the absence of any guidance or counseling, the person gets addicted and become dependent on their use. Thus, the addictive potential of drugs and alcohol pull the user into a vicious circle leading to their regular abuse from which she may not be able to get out. In the absence of any guidance or counseling, the person gets addicted and become dependent on their use. जो होगा देखा ही जाएगा. Thus, the addictive potential of drugs and alcohol pull the user into a very vicious circle leading to their regular abuse from which she may not be able to get out. In the absence of any guidance or counseling, the person gets addicted and become dependent on their use. Okay. Dependence is the tendency of the body to manifest a characteristics and unpleasant withdrawal syndrome. Dependence is the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal symptom. If regular dose of drugs, alcohol is abruptly discontinued. Withdrawal syndrome, unpleasant. Withdrawal syndrome. If regular dose of drugs and alcohol is abruptly discontinued, this is characterized by anxiety. Shakiness, nausea. And sweating. Dependence is the tendency of the body to manifest a characteristics and unpleasant withdrawal syndrome. If regular dose of drugs, alcohol is abruptly discontinued, this is characterized by anxiety, sickness, nausea, and sweating. Anxiety, sickness, nausea and sweating. Anxiety, shakiness, 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 nausea and sweating, which may be relieved when use is resumed again. In some case, withdrawal symptom, that is withdrawal syndrome. Withdrawal symptoms can be severe and even life threatening.
Okay, withdrawal syndrome can be life threatening and severe, and the person may need medical supervision. Dependence leads the patient to ignore all social norms. Dependence leads the patient to ignore all social norms in order to get sufficient funds to satiate his her needs. Satiate. Another terms for state. To completely satisfy a desire or need. Satiate. Satiate. To satisfy or desire. To satisfy completely a desire. Okay, desire or need. In some cases, withdrawal symptoms can be severe and even life-threatening, and the person may need medical supervision. Okay. Dependence leads the patient to ignore all social norms in order to get sufficient funds to satisfy a desire or need. These result in many social adjustment problems. Okay, withdrawal syndrome, nausea, sweating, anxiety, shakiness. तुमने तो देखा ही, तो तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए माँ. Prevention and control. Effects of drug alcohol abuse. The immediate effect of drugs and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior, vandalism, and violence. The immediate adverse effect of drugs and alcohol abuse are manifested in the form of, हाँ वो तो वही तो है. जब मैंने उन्हें बोला था कि वो अडिक्ट है, तो उन्होंने क्या बोला पता है? Reckless. Just reckless of consequences, irresponsible. Irresponsible. Vandalism. It's okay, bro. It's okay. Vandalism. Destructive behavior that occurs when individual under the influence of a property. Oh, vandalism. Destructive behavior. Vandalism, recklessness, violence. Excessive doses of drugs may lead to coma and death due to respiratory failure, heart failure, or cerebral hemorrhage. Respiratory death, respiratory failure, heart failure, cerebral hemorrhage.
हार्ट फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर, छोड़ दो ना उसे। रेस्पिरेट, मेरे दिमाग में क्यों ये चल रहा है अभी, वो भी इस टाइम। निकल जा प्लीज। रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर, सेरिब्रल हेमोरेज, सेरिब्रल हेमोरेज, सेरिब्रल हेमोरेज, ब्रेन लीडर। देखना है ना ये सब, कैसे चलेगा। A combination of drugs or their intake along with alcohol. A combination of drugs or their intake along with alcohol generally result in overdosing and even deaths. Generally, along with alcohol and death. The most common warning sign of drug and alcohol abuse among youth include drop in academic performance, drop in academic performance, unexplained absence from school and college. ये थी ही नहीं, कैसे पता चलेगा? Unexplained absence from school and college. Lack of interest in personal hygiene. नहीं, वो hygienic तो है. Withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressive, rebellious behavior. Rebellious behavior. Deteriorating relationship with the family and friends, loss of interest in hobbies, change in sleeping, eating habits, fluctuations in weight, appetite, etc. Drop in academic performance, unexplained absence from school and college, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressiveness, and rebellious behavior. Rebellious behavior, deteriorating relationship with family and friends, loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating habits, fluctuations in weight, appetite, etc. There may even be some far-reaching implications. There may even be some far-reaching implications of drug alcohol abuse in an abuse. Far-reaching implications of drug alcohol abuse. If an abuser is unable to get money to buy drugs, alcohol, he may turn to stealing. The adverse effects are just not restricted to the person who is using drug or alcohol. At times, a drug alcohol addict become the cause of mental and financial distress. भाई मुझे इसलिए नहीं चाहिए वो. The adverse effects are just not restricted to the person. The adverse effects are just not restricted to the person who is using drugs or alcohol. At times, a drug alcohol addict becomes the cause of mental and financial distress. A drug alcohol addict becomes the cause of mental and financial distress to her entire family and friends.
are just not restricted to the person who is using drugs or alcohol at times. A drug alcohol addict becomes the cause of mental and financial distress to his or entire family and friends. The adverse effects are not just restricted to the person who is using drugs or alcohol. At times, a drug alcohol addict becomes cause of mental and financial distress to his her entire family and friends. A drug alcohol addict become cause of mental and financial distress. Becomes the cause of mental and financial distress in friends. Those who take drugs intravenously, direct injection into vein using a needle and syringe, are much more likely to acquire syndromes, acquire serious infections like AIDS, AIDS and hepatitis B. Intravenous drug abusers are more at risk. That is AIDS and hepatitis B. The virus which are responsible for this disease are transferred from one person to another by sharing infected needles and syringes. Okay, both AIDS and hepatitis B infectious and are chronic. Okay, are chronic infection. AIDS and hepatitis B infections are chronic infections and fatal ultimately fatal. Both can be transmitted through sexual contact or infected blood. Both can be transmitted through sexual contact and infected blood. Astaghfirullah, we will do it. Both can be transmitted through sexual contact and infected blood. Sexual contact or go infected blood but apni transmit हुन सक्छ. Hepatitis B and AIDS. Okay. The use of alcohol during adolescence may also have long-term effects. It could lead to heavy drinking in adulthood. Okay, long-term effect. Heavy drinking in adulthood. The chronic use of alcohol, drugs and alcohol damaged nervous system and liver. Cirrhosis. The chronic use of drugs and alcohol. The use of alcohol during adolescence may also have long-term effects. It could lead to heavy drinking in adulthood. The chronic use of drugs and alcohol damages nervous system and liver. Cirrhosis. The chronic use of drugs and alcohol damages nervous system and liver. The chronic use of drugs and alcohol damages nervous system and liver. Cirrhosis. The chronic use of drugs and alcohol damages nervous system and liver. Cirrhosis. Nervous system and liver. Cirrhosis. It's okay, ma. It's okay. Just control. The use of drugs and alcohol during pregnancy is known to adversely affect the fetus. Okay, use of drugs and alcohol during pregnancy is known to adversely affect the fetus. Okay, another misuse of drug is what certain sports person do to enhance. Another misuse of drug is what certain sports person do to enhance their performance. Okay, they misuse narcotic anabolic steroids and diuretics and certain hormone in sports to increase muscle strength and
bulk, and to promote aggressiveness, and as a result, increase athletic performance. The side effect of the use of anabolic steroids in female includes masculination. Mascula तुम गलत pronounce कर रहे हो. Masculinization. Masculinization. Features like male. Masculine. Okay. Masculinization. Increased aggressiveness, mood swings, depression, abnormal menstrual cycle, excessive hair growth on the face and body, enlargement of clitoris, deepening of voice. In male, it includes acne, increased aggressiveness, mood swings, depression, reduction in the size of testicles, decreased sperm production, potential for kidney and liver dysfunction, breast enlargement, premature baldness, enlargement of prostate gland. These effects may be permanent with prolonged use. In the adolescence, male and female severe facial and body acne. In the adolescent, male or female, severe facial and body acne and premature premature closure of the growth centers of the long bone may result in stunted growth. Prevention and control. The age-old adage, adage of prevention is better than cure holds true here also. It is also true that habits such as smoking, taking drugs, or alcohol are more likely to be taken up at a young age. More during adolescence. Hence, it is best to. It's okay. मुझे क्यों याद आ रहा है ये चीज़? 28. Okay. Hence, hence, it is best to identify the situation that may push an adolescent towards use of drugs or alcohol, and to take remedial measures well in time. In this regard, the parents and the teachers have a special responsibility. Parenting that combines with high level of nurturance and consistent discipline has been associated with lowered risk. Parenting that combines with parenting that combines with high level of nurturance and consistent discipline has been associated with lowered risk of substances. Alcohol, drugs, tobacco abuse. Alcohol, drugs, and tobacco abuse. Some of the measures mentioned here would be particularly useful for prevention and control of alcohol and drugs. Some of the measures mentioned here would be particularly उन लोगों को लगता होगा कुल मुझे नहीं लगता ना प्लीज मत आओ ना दिमाग में ये चीज has been associated with lower risk of substances, alcohol, drugs, tobacco abuse. Some of the measures mentioned here would be particularly useful for prevention. Some of the measures mentioned here would be particularly useful for some of the measures mentioned here would be particularly useful for prevention and control of alcohol and drug abuse among adolescents. Avoid undue peer pressure.
Every child has his her own choice and personality, which should be respected and nurtured. A child should not be pushed unduly to perform beyond his or threshold limits, be it studies, sports, or other activities. Avoid undue peer pressure. Undue peer pressure. Okay. Education and counseling. Education and counseling. Him, her. Educating and counseling him her to face problem and stress and to accept disappointments and failures as a part of life. It would also be worthwhile to channelize मुझे इतना गिल्टी फील होगा ना अगर मैंने ऐसा किया तो it would also be worthwhile to channelize the child's energy into healthy pursuits like sports, reading, music yoga and other extracurricular activities. Sports, reading, म्यूजिक योगा एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मुझे योगा क्लास करना है सही है एजुकेशन एंड काउंसलिंग सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड peers help from parents and peers should be sought immediately so that they can guide appropriately. Help me even be from close and trusted friends. Beside getting proper advice to sort out the problems, this would help young to vent their feeling of anxiety and guilt. Vent a feeling of anxiety and guilt. Okay, looking for danger sign. A lot parents and teachers need to look for and identify the danger sign discussed above. Even friends, if they find someone using drugs or alcohol, should not hesitate to bring this to the notice of parents or teachers in the best interest of the persons concerned. Appropriate measures would then be required to diagnose the malady and the underlying causes. This would help in initiating proper remedial steps or treatment. Seeking professional and medical help. Seeking professional and medical help. A lot of help is available in the form of highly qualified psychologists, psychiatrists, and de-addiction and rehabilitation programs to help individuals who have unfortunately got in the quagmire of alcohol abuse. With such help, the affected individual, with sufficient efforts and willpower, can get rid of the problem completely and lead a perfectly normal and healthy life. A lot of help is available in the form of highly qualified psychologists, psychiatrists, and de-addiction. De-addiction. A lot of help is available in the form of highly qualified psychiatrists, de-addiction and rehabilitation program to help individuals who have unfortunately got in quagmire of drugs, alcohol abuse. With such help, the affected individual with sufficient efforts and willpower can get rid of the problem completely and lead a perfectly normal and healthy life. बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल Excuse me. A soft flat area of land that has a lot of mud, a difficult, complicated, dangerous situation. This means dangerous situation. भाड़ में जाए सब कुछ. Seeking professional and mental help. A lot of people is available in the form of highly qualified. A lot of help is available. Okay. Individuals who have unfortunately got in a quagmire of drugs and alcohol. मुझे नहीं पढ़ना बट मुझे पढ़ना पड़ेगा ये. Health is not just the absence of disease. Not just absence of disease. It is a state of complete physical, mental and social, psychological well-being. State of complete physical, mental
social, and psychological well-being. Disease like typhoid, cholera, pneumonia, fungal infection of skin, malaria, and many other are the major cause of distress in human beings. Okay, typhoid, cholera, vibrio, cholera, vibrio, cholera, pneumonia, Haemophilus influenza, and salmonella. Salmonella है pneumonia, pneumonococcus. आइयो वो बैक्टीरिया का नाम ही भूल गया. ऐसे होगा तेरा नीट क्लियर. देख रही हूँ मैं. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बहन. वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर चाहिए तो ये तो हो गया तुम्हारा. एक तो मलेरिया, इसमें मस्कीटो वेक्टर रहेगा. कैरियर होगा तुम्हारा हाउस फ्लाई, एंटामोबा हिस्टोलाइटिका, अमीबिक डाइसेंट्री में. और ये तुम्हारा एक और क्यूलेक्स रहेगा, एनोफिलस. क्यूलेक्स ही है ना? हाँ क्यूलेक्स ही है. एलिफेंटाइसिस. आज पढ़ो कल भूलो, क्या फायदा यार. फिकोरल रूट था ना इसका. क्यूलेक्स मस्कीटो, देखा मस्कीटो ही है. ये तो फिकोरल है, इसका कोई नहीं चाहिए. वो भी फिकोरल ही है. फिलारियासिस, एलिफेंटाइसिस. आज पढ़ो कल भूल जाओ, ये सही है तुम्हारा. Vector borne disease like malaria, especially one caused by Plasmodium falciparum. क्या फर्क पड़ता है? Vector borne, if not treated, may prove fatal. Beside personal, other vector borne, this is amoebic, A-M-O-E, amoebic dysentery. Dysentery. Housefly. रहेगा तुम्हारा ये क्या था अभी? एलिफेंटाइसिस, फिलारियासिस, एलिफेंटाइसिस. क्यूलेक्स मस्कीटो. एडीज मस्कीटो. एनोफिलस, PHE, एनोफिलस मस्कीटो, एनोफिलस मस्कीटो ना. एडीज कहाँ पर था? मुझे क्या पता, कहीं तो था होगा. मुझसे नहीं होगा. अभी पढ़ो, अभी भूल जाओ. Aedes mosquito disease like dengue and chikungunya. Aedes mosquito vector. Aedes mosquito disease like dengue and chikungunya. Carrier होगा ना उस. रोने का दिल कर रहा है. मुझसे नहीं होगा यार, पढ़ाई इतना मुश्किल होता है. If not treated, may prove fatal. Beside personal cleanliness and hygiene, public health measures like proper disposal of waste, decontamination of drinking water, disposal of waste, proper disposal of waste, decontamination of drinking water, control of vectors like mosquitoes, and immunization are very helpful in preventing these diseases. Our immune system plays the major role in preventing these diseases. Preventing immune system plays a major role in preventing these diseases. When we are exposed to disease causing agents, the innate defense of our body, innate defense, non-specific, non-specific and by birth, non-specific and by birth, innate defense of our body like skin, mucous membrane, antimicrobial substance present in our tears, saliva, and the phagocytic cell helps to block the entry of pathogens, phagocytic cells, into our body. Example, PMNL, monocytic
phagocyte, macrophage, phage, phage, this is neutrophil, pH, and natural killer, lymphocyte. If the pathogens succeed in gaining entry to our body, specific antibodies, humoral immune response, and cell-mediated immune response, antibody-mediated, and cell-mediated T-lymph immune response serves to kill the pathogens. Immune system has memory. This is important, okay? Immune system has memory. They have memory. On subsequent exposure to the same pathogen, the immune response is rapid. Exposure to same pathogen, immune response is rapid, more intense. This forms the basis of protection. Of by vaccination and immunization, afforded by vaccination and immunization. Among other diseases, AIDS and cancer kills a large number of individuals worldwide. AIDS caused by human immunodeficiency virus. AIDS caused by human immunodeficiency virus is fatal but can be prevented if certain precautions are taken. Many cancers are curable if detected early, and appropriate therapeutic measures are taken. Of late, drug and alcohol abuse among youth and adolescents is becoming another cause of concern. Because of the addictive nature of alcohol and drugs, their perceived benefits like relief from stress, a person may try taking this in the face of peer pressure, examination related and competition related stresses. In doing so, she may get addicted to them. Education about their harmful effect. Counseling, seeking immediate professional and medical help would totally relieve the individual from these evils. Avoid undue peer pressure. Avoid undue peer pressure. Education and counseling. Seeking help from parents and peer. Seeking help from parents and peer. Okay. Looking for danger sign. Seeking professional and medical help. Undue. Relieve them. Okay. Free them from undue pressure, peer pressure. Okay. Avoid undue peer pressure. Education and counseling is important. Seeking help from parents and peers. Look for behavioral change, danger sign, okay? Seeking professional and medical help. Withdrawal syndrome, okay. Nicotine is the that is responsible for addictive nature. Nicotine stimulates adrenal gland to release adrenaline and non-adrenaline. Adrenaline gland like stimulate गर्छ दुईटा adrenaline र non-adrenaline दुईटाले blood pressure increase गर्छ, heartbeat rate increase गर्छ. You will get jealous, bro. You will get jealous. God, please help me. Raise blood pressure, increase heart rate, okay? Coronary disease, urinary bladder, throat cancer, coronary heart disease, urinary bladder cancer, throat cancer, lung cancer, emphysema, bronchitis,
Gastric ulcer, gastric ulcer, gastric ulcer. Gastric ulcer. A gastric ulcer, also known as stomach ulcer, is a sore in the lining of stomach. The burning or guaning pain in the center of the abdomen, feeling full easily, loss of appetite, heartburn, acid reflux, chest pain, fatigue, bloating, burping. Lining, okay, sore in the lining of stomach. A burning or guaning pain in the center of the abdomen, especially on an empty stomach. Feeling on an empty stomach. Loss of appetite, heartburn, acid reflux. Helicobacter pylori, H. pylori bacteria. Long-term use, non-steroidal anti-inflammatory medicines such as aspirin, ibuprofen, and naproxen. Other health conditions such as Crohn's disease, cancer treatment. Cancer to now, please. Acid suppressing drugs such as proton pump. Anemia, which means your blood can't carry enough oxygen. Oh हाँ, मैं anemia तो था मुझे. Bloody or dark stools, vomiting that is bloody or look like coffee ground, weight loss. हाँ, ये पक्का इसी की वजह से होगा. आई थिंक मुझे गैस्ट्रिक अल्सर है. ये सिम्टम्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है. डू आई हैव गैस्ट्रिक अल्सर? I think I do have this one, okay, gastric ulcer. I don't overthink, bro. लेकिन ये सारा सिम्टम्स तो मेरे पास है. तो मैं बीमार हूँ इसलिए मैं वेट गेन नहीं कर पा रही हूँ. A sore in the lining of the stomach. Gastric ulcer, coronary heart disease, emphysema, bronchitis, throat, okay, urinary bladder, cancer of lungs. Got it? This one. Another misuse of drugs with certain sportsperson do to enhance their performance. They misuse narcotic, analgesic, anabolic steroid, diuretics, and certain hormones in sports to increase muscle strength and bulk and to promote aggressive and as a result increase athletic performance. तीनटा ड्रग को नाम क्या बना था? 1 2 3. Narcotics, analgesic, narcotic analgesics, anabolic steroids, diuretics, narcotic analgesics. Human health and disease, class 12 NCRT. Correct, you are correct. Miss Shine, you are correct. Is that you in your profile picture? You look so pretty. Oh, so you are in Allen. Especially that till in your jawline. It's so attractive, bro. Anyways, let's study, okay? You are pretty. Narcotic analgesic, narcotic analgesic, narcotic analgesic, analgesic,
narcotic analgesic, heroin, fentanyl, buprenorphine, okay, morphine, heroin, okay, morphine, opioids, इसमें कौन आएगा? Narcotic analgesic, opioids, okay, opioids, narcotic analgesic, and the other one is anabolic steroids, opioids. Narcotic analgesic, nicotine था वो तो, nicotine and alkaloid. Nicotine is alkaloid, okay, nicotine, alkaloid, coca, opioid, cannabinoid, opioid, cannabinoid, 1, 2 and 3, opioid, cannabinoid, and the third one is opioid, cannabinoid, and I forgot, coca alkaloid, okay, coca alkaloid. So this nicotine is alkaloid. Anabolic steroids, anabolic steroids, testosterone. Steroids are a class of drugs that are structurally related to testosterone, the main male sex hormone, and produce effects by binding to the androgen receptors. Anabolic steroids related to testosterone, testosterone, right? Testosterone, anabolic steroid. Narcotic analgesic, GESIC, analgesics, narcotic analgesic, it's okay, narcotic analgesic, ये एक हो गया ना, narcotic analgesic, it's okay bro, it's okay, होगा ब्रो, हाँ कोशिश कर रहे हैं मिस शाइन. नार्कोटिक एनाल्जेसिक, और तुम्हारा दूसरा होगा एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, narcotic analgesic, anabolic steroids, and the third one is narcotic analgesic, anabolic steroids, and diuretics. Also known as water pill, are a class of drugs. Water pill are a class of drugs that increase urine production to help the body get rid of excess salt and water. A class of drug that increases urine production to help the body get rid of excess salt and water. A class of drugs that increase urine production to help the body get rid of excess salt and water. Diuretics, okay. Narcotic analgesics, anabolic steroids, diuretics, and certain hormones, HO. Oh, so cute seeing you while studying. क्या ही बोलूँ मैं इसका, क्या उत्तर दूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं. Narcotic analgesic, anabolic steroids, diuretics, and certain hormones in sports to increase muscle strength, ये एक हो गया, okay. 1, to increase muscle strength and bulk, promote aggressiveness, ये 3 हो गया.
to increase muscle strength, bulk, to increase muscle strength, to increase bulkness, to promote aggressiveness, and as a result increase athletic परफॉर्मेंस. मेन तो यही है कि परफॉर्मेंस इंक्रीज करे. इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस, मसल स्ट्रेंथ, इंक्रीज bulkness, muscle strength, and then one last one is aggressiveness. Okay. The side effect of the use of anabolic steroid in female includes side effect of the use of anabolic steroid. Okay. Side effect. Anabolic steroid. Side effect of anabolic steroid in females. Side effect of anabolic steroid in female. Side effect कहाँ गया ये, भाग गया कहीं. अभी तो ये था. The side effect of use of anabolic steroid in females. Okay, include masculinization, features like males, masculinization, increased aggressiveness, masculinization, increase aggressiveness, features like male. Okay, masculinization, increase aggressiveness, mood swings, depression, abnormal menstrual cycle, mood swing, depression, abnormal menstrual cycle, excess hair on face and body, growth on face and body. This is 6th. Okay, excessive hair growth on face and body. This is 6th. Enlargement of clitoris is 7th. This one is 7th. Deepening of voice, 8. Okay, there are 8. Enlargement of this abnormal menstrual cycle, abnormal menstrual cycle, enlargement of clitoris, then mood swings, depression, mood swings, depression, excessive hair growth on face and body, masculine like male, mood swings, depression. Masculine, features like male, increase aggressiveness, features like male, masculinization, increase aggressiveness, mood swings, depression, abnormal menstrual, enlargement of deepening of voice, increase
increase of voice. Increase aggressiveness. Okay. Increase muscle strength. Increase muscle strength. Yo, muscle strength increase. But okay. Bulk and promote aggression. Aggressiveness. Aggressiveness. Aggression. Aggression. Of kunchi of the way of anabolic steroid. Steroid. Anabolic steroid. Analgesic. Analgesic. Narcotic nicotine. Narcotic analgesic, anabolic steroids, and diuretics, okay, and certain hormones in sports. Bulk and promote aggressiveness. Narcotic analgesic, anabolic steroid, diuretics. Narcotic, that is nicotine. Narcotic. Tick. Eat, okay.
पता नहीं क्या 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 इज दैट अ सब्जेक्ट? अरे भाई क्या, व्हाट इज दैट अ सब्जेक्ट? क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। डेविल रो, हम लोगों का कौन सा स्लॉट कंप्लीट हो गया? फोर्थ स्लॉट भी कंप्लीट हो गया। ओके, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। नहीं पढ़ेंगे, सुबह के 10 बजे तक पढ़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं दिन भर सोती हूँ, और तो फिर भी क्लास है, भैया ने क्लास बुलाए तो जाऊंगी वहाँ पर 4 बजे के आसपास। इधर देख लो। हाँ देख रही हूँ, बोलो तो क्या हुआ? मैं ही यहाँ पर किसी के उसको स्टॉक कर रही थी। बट मुझे तो आपसे नींद आ रही है, अब से नींद आ रही है। नेस्ट कैफे का नाम सुना है ना, पी लो। मैं भी जा रही हूँ पीने। नहीं सोएंगे आज तो, कुछ भी हो जाए ना। मैं दिन में भी कम पढ़ती हूँ एंड घर में प्रॉब्लम्स की वजह से और नहीं हो पाती पढ़ाई। मेरे तो घर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं ही हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन मैं दिन भर सोती हूँ, इसलिए मैं रात भर पढ़ूंगी। नहीं, अगर तुम रेस्ट करना चाहती हो तो ठीक है, तुम रेस्ट कर सकती हो, ज़्यादा फोर्स मत करो खुद को। यू आर इम्पोर्टेंट ब्रो। हाँ लाइव ही रखूंगी, वरना मैं फिर नहीं पढ़ूंगी ना, लाइव नहीं है तो मैं सो जाऊंगी इसके बाद। लेकिन अभी सोएंगे नहीं, अभी तो पढ़ेंगे। ये ब्रेक ज़्यादा बढ़ ना जाए है ना, 8 मिनट का रख देती हूँ मैं। जल्दी जल्दी कॉफ़ी बना के आती हूँ, तो फिर ट्राई करूँगी मैं भी। हाँ कॉफ़ी बना के आओ, पढ़ते हैं आज तो, कब से नहीं पढ़ा। कॉफ़ी ब्रेक गाइस, कॉफ़ी ब्रेक। सब लोग आ जाएंगे मुझे डांटने, इसलिए लिख दिया फिर से कॉफ़ी ब्रेक है।
मैं बोतल भी ले जाती हूँ उसमें पानी रखने के लिए। गिर जाएगा ये फिर से। मैं पानी भी लेके आती हूँ ओके, क्योंकि मैं आज सुबह 9 बजे उठी एंड शाम को भी सोई। आई एम स्टडिंग फॉर नीट। मैं खुद ही भूल जाती हूँ मैं कौन सा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। थैंक यू CRS के। क्या लिखा था सिंचन? बोलो अब कुछ बोलना है तो। I'm good, I'm good. ब्रेक खत्म होने वाला है।
ब्रेक भी खत्म हो गया था। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कर रही थी अभी तक। हाँ मैं ड्रॉपर हूँ, मैंने एग्ज़ाम कब का दे दिया था और उसके बाद मैं कॉलेज भी गई हूँ। सो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, ना ही सुनो तो अच्छा होगा। हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। एवरीवन नियर मी इज गिविंग बोर्ड्स। हाँ कोई बात नहीं, एक बैच ही तो तुमसे छोटे है। थैंक यू। नो आई विल माइंड। भाई ये 74.2 ही था। गुड लक सर्वजीता। आई थिंक तुम ही पढ़ रहे हो, बाकी कोई तो पढ़ नहीं रहा है, वो देखने आए हैं बस। और कोई भी पढ़ रहा हो तो उसको भी गुड लक, लेकिन आई नो तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। ओके पढ़ने का मन नहीं होता है, पढ़ने का मन ना हो तो भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि अम्मा ने बोला कि यू आर द ओनली होप ऑफ माइन। गुड लक ऑल। मैं टाइमर स्टार्ट कर रही, कोई नहीं बोलेगा। ओके सब लोग पढ़ेंगे, पढ़ो यार। हमारी इमोशन कैसी की तैसी। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ये सुन के, बार बार ये बोलने के लिए बोल रहे हो। Human health and disease, human health and disease. So the following gland is often referred in relation with AIDS: thyroid, thymus, adrenal, pancreas. Thymus.
thymus. Thymus, primary lymphatic organ, okay. Primary T lymphocyte, T helper cell. After resection, memory T cell, memory T cell, memory T cells, memory T cells, memory T cells. Plasma cell is associated with humoral immunity. In male, it includes acne. Side effect of anabolic steroid in male. Steroid in male. Anabolic steroid in male. Acne. Increased aggressiveness. Increased aggressiveness. Increased aggressiveness. Mood swings. Mood swings. Depression. Depression. Reduction in the size of testicles. Reduction in the size of testicles. Reduction in the size of testicles. Decrease sperm production. Decrease sperm production. Decrease sperm production. Decrease sperm production. Potential for kidney and liver dysfunction. Potential for kidney and liver dysfunction. 7. Potential for kidney and liver dysfunction. Potential for kidney pani and liver dysfunction. Dysfunction. Breast enlargement. Breast enlargement. Acne. Increased aggressiveness. Mood swings. Depression. Reduction of size of the testicles. Decrease sperm production. Potential for kidney and liver dysfunction. Breast enlargement. Premature baldness. Premature baldness. Premature baldness. 10. Enlargement of prostate gland. Enlargement of prostate gland. Prostate gland. Premature baldness. Breast enlargement. Kidney and liver dysfunction. Decreases sperm production. Reduction of size of the testicles. Depression. Reduction of size of testicles. Enlargement of prostate. Enlargement of prostate. Enlargement. Enlarge. Enlargement. Prostate gland of
prostate gland, enlargement of prostate gland. Seminal vesicles, prostate. Prostate gland images. Enlargement of prostate gland. Normal prostate. Normal prostate. Enlarged prostate. Enlarged prostate. This is normal prostate. Okay. This is bladder, urine. Okay. Urine, bladder, prostate. Enlarged prostate. Okay, enlarged prostate. Enlarged prostate. Prostate enlarged. Okay. Prostate gland. Prostate gland. Okay. Potential for kidney के baldness. Mood swings, depression, reduction. Size of testicles. Reduction in the size of testicle. Testis. Testicle. Hydrocele. Reduction testicle size can be caused by various factors including yeast infection, hormonal imbalance, injury, or medical conditions. Okay. Design. Testicle. Reduction in the size of testicles. Testicles. Reduction in the size of testicles. Anabolic steroid in male. Breast. Enlargement of breast. Mood swings. Enlargement of breast. Mood swings. Depression. Decrease in the sperm production. SPER. Production. Decrease in sperm production. Breast. Enlargement of breast. Mood swings. Depression. Decrease in sperm production. Premature baldness. Baldness. Size
of prostate, PROS, prostate gland, GLAND gland. Reduction the testicle size. Okay. Enlargement of breast, mood swings, acne, ACNE, acne. Okay, increase aggressiveness, EGRASSIV, aggressiveness. Enlargement of breast, mood swings, depression, decrease in sperm production, premature baldness, increase in the size of prostate gland, reduction of testicular size, acne, increase in aggression. Enlargement of, ये तो फीमेल का हो गया ना, क्लिट. Enlargement of breast हो गया. Abnormal menstrual cycle, depression, mood swings, increase in facial and body hair. Okay, deepening of voice, masculinization, increase aggressiveness. Baldness, decrease in sperm production. Acne, increased aggressiveness. Mood swings, depression, reduction of size of the testicles. Reduction of the testicle size. Oh, potential kidney and liver dysfunction. Potential kidney and liver dysfunction. DYS dysfunction. Function. Potential for kidney and liver dysfunction. Breast enlargement, premature baldness, enlargement of prostate gland, prostate gland. Okay. Mood swings, depression, the E to Z senior. Depression, mood swings and increase aggressiveness. Okay, aggression of enlargement of clitoris होता है female में, मेल में enlargement of breast. Okay. Abnormal menstrual cycle, decrease in sperm production. Okay. Increase in facial and body hair. Premature baldness. Increase in the size of prostate gland. Reduction of the size of testicles. Acne. Deepening of voice. Masculinization. Potential kidney and liver dysfunction. I am studying biology, Anup. Which of the following is a non-specific type of defense that is present at the time of birth? Non-specific. A to cell-mediated immunity, innate immunity. Time of birth, non-specific. Resides in salivary gland of vector mosquito. Sporozoites in Plasmodium. Wrong statement with reference to immunity. When ready-made antibodies are directly given, it is called passive immunity. Correct. Active immunity is quick and gives full response. Nah, this is wrong. Active immunity is not quick and full response. ये तो wrong है ना. When exposed to antigen, living or dead, antibodies are produced in the host body. It is called active immunity. When exposed to antigens, living or dead, antibodies are produced in host body. It is called active immunity. Fetus receives some antibodies from mother.
It is an example of passive immunity, natural passive immunity. Ready-made in case of tetanus and snake bites. A person suffering from leukemia has tumors in adipose tissue, increased number of plasma cells, increased number of melanocytes, increased number of WBCs. A person suffering from leukemia has increased number of WBC. ये तो यहाँ पर लिखा भी है मैंने. Abnormal number of tumors. Okay, a person suffering from leukemia has abnormal number of increased number of WBCs. Okay. Which of the following technique is safest for detection of cancer? MRI, obviously, because it uses non-ionizing X-rays like UV rays. The body organs markedly affected by alcohol are skin and eye, skeletal and nervous and digestive system, reproductive and circulatory system. So निकोटिन होता है, कोका alkaloid. Skeletal and nervous and digestive system. Nervous system and digestive system. Okay, was easy? Yeah. The body organs markedly affected by alcohol. Nervous and digestive system. Alcohol affects nervous and digestive system. Nervous and digestive system. Alcohol affect nervous and digestive system. Which of the following disease is caused due to an allergic reaction? Leprosy, thyroid, asthma. Okay, match the term given in list 1 with the description in list 2 and select the correct option from the codes given below. Okay. Helper T cells, plasma cells, killer T cells, interferon. Cells that are active in production of antibodies. Okay. Activate T or B lymphocyte to become plasma cells. Protein produced by a virus infected cell. So alpha interferon combine with antigens causing lysis and release of cytokinins. Combine with antigens causing helper and T cells. Activate T or B lymphocytes to become plasma. Rinchen. Hi. Helper and T cells activate T or B lymphocytes to become plasma cell. Helper T cells. Helper T lymphocytes. Okay. HIV enters helper T lymphocytes, replicates and produces progeny virus. The progeny virus released in the blood attack the helper T lymphocytes. This is repeated, leading to progressive decrease in the number of helper T lymphocytes in the biopsy of the infected person. Helper T lymphocytes. Due to decrease in the number of helper T lymphocytes,
गेस व्हाट, रिंचिन आई थिंक सिक्किम से ही है. क्योंकि रिंचिन नेम ना भूटिया लोगों को देते हैं ये, और ये एक यहाँ का सिक्किम का ही ट्राइबल है. लेकिन उसने जो भी लिखा था उसने डिलीट कर दिया, मैं देख नहीं पाई. Helper T cells. Helper T cells activate T or B lymphocytes to become plasma cell. Okay, ये कहीं पर लिखूँ क्या मैं? Helper T cells. Plasma cell B को 1. Plasma cells that are active in production of antibodies. Plasma cell. Helper and T cells. Helper T cells. T or B lymphocytes to become plasma cell. HELP or helper T cells activate T or B lymphocyte to become plasma cell. Activate B and T lymphocyte, LYMPHO lymphocytes. Helper T cells activate B and T lymphocytes to become plasma cell, to become plasma, PLASMA, plasma cell, to become plasma cell. Then we have helper T cells. Then we have plasma cell. This is one. Plasma cell, PLASMA, plasma cell. Plasma cell cells that are active in production of antibiotics, antibodies, cells that are active in production of antibodies. Killer T cells. Killer T cells. 4 and 4. Combine with antigen. Killer T cells combine with antigen, causing lysis and release of cytokinins. Combine with antigen causing lysis. Causing lysis. Killer को 4. And release of cytokinins and release of RELEA. Release of cytokinins. Cellular cytokinin. Cellular and then cytokinin. Interferons, which protect non-infected from further viral infection. Interferon, protein produced by virus infected cell. अरे इतना easy था, मैं बुद्धू लड़की. D को 3. Interferon, alpha interferon चाहिए हो. The patients are given substances called biological response modifiers such as alpha interferons, which activates the immune system and helps in destroying tumors. Okay. Most cancers are treated by combination of surgery, radiotherapy, and chemotherapy. Tumor cells have been shown to avoid the detection and destruction by tumor cells have been shown to avoid the detection
to avoid. Tumor cells have been shown to avoid the detection and destruction by immune system. Tumor cells have been shown to avoid the detection and destruction by immune system. Tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system. By immune system. Detection, avoid detection and destruction. Avoid detection and destruction by immune system. Therefore, the patients are given substances called biological response modifier. Biological response modifier, alpha interferon. Biological response modifier. Biological response modifier. Check if it's there. Alpha interferons, which activates the immune system and helps in destroying the tumor. Okay. Therefore, the patients are given substances called biological response modifiers such as alpha interferon. Therefore, the patients are given substances called biological response modifier. Biological response modifier. Therefore, the patients are given substances called biological response modifier. Therefore, the patients are given substances called biological response modifiers such as alpha interferons, which activates the immune system and helps in destroying the tumor. Alpha interferon. Alpha interferon, protein produced by virus infected cell. Protein produced by virus infected cell. Interferons, that is interferon. Okay. Killer. ABCD. COCO4. Combined with antigen causing lysis and release of cytokinin. Active in production of antibodies. Following table summarizes the differences between normal cells and cancerous cell. Pick up the wrong difference and select the correct options. The cells undergo cell division as well as differentiation, correct? The cells undergo cell division but do not undergo differentiation, correct? These cells shows contact inhibition, that is, after coming in contact with other cells, these inhibit their uncontrolled growth, correct? These cells have lost the property of contact inhibition, correct? Lifespan of the cells is not definite. Lifespan of the cells is definite. Lifespan, you three the incorrect one. Lifespan of the cells is not definite. Definite. Lifespan of cells. Lifespan of these cells is. Lifespan of the cells is definite. These cells divide in an uncontrolled manner. These cell divides in controlled manner. Okay. 3 only. Normal cells undergo cell division as well as cell differentiation, property of contact inhibition. Normal cell is definite and they divide in controlled manner. Undergo differentiation, property cells is not definite and they divide in uncontrolled manner. Same चीज लिख दिया है किसी ने. In human, receptors for opioids are present in opioids के लिए receptors CNS and gastrointestinal. Central nervous system and gastrointestinal tract, A and B. Metastasis is the process of excessive cell proliferation, transformation of being tumor into a malignant tumor, transformation of normal cell in cancerous cell, movement of cancerous cell from one organ to another.
just 30 and then well we find benign tumor are called neoplastic cells. Na, it's malignant tumor. Malignant tumors remain in place to form a compact mass by the process known as metastasis. Both assassin and reasons are false. Spleen and select correct option. Spleen is bean shaped, correct organ that mainly contains lymphocyte and phagocytes. Lymphocyte हाँ होता है, lymph node होता है ना उसमें. T lymphocyte and B lymphocyte दोनों ही होता है, phagocytes भी होता है. Spleen is large reservoir of erythrocytes, correct. Spleen is primary lymphoid organ. Spleen primary lymphoid organ नहीं है, secondary है. Spleen act as a filtration of blood by trapping blood-borne microorganisms. Only 3 is incorrect. मतलब कि 1, 2 and 4 is correct. 1, 2 and 4 is correct. Cocaine is commonly called as coke or crack. Cocaine, right? Coke and crack. Coke and crack. Coke, crack. Both B and C. Several genes called a DAS have been identified in normal cells, which, when activated, will turn into DAS and undergo certain conditions, could lead to cancerous transformation of the cell. Complete the above paragraph by selecting correct sequence of word. Several genes called oncogenes, cellular oncogenes, oncogenes have been identified in normal cells. Okay, वो तो है हम लोगों का cellular oncogenes और proto-oncogenes, which when activated will turn into dash and under certain condition turn into oncogenes and could lead to cancerous transformation of the cells. यही है ये तो. Proto-oncogenes नहीं, proto-oncogenes to oncogenes होता है वो. In initial days of lactation, the mother milk colostrum is rich in which of the following antibody? IgA. एलेक्स की वजह से ना ये मिल्क वाला मुझे कभी मैं नहीं भूलूंगी. Smoking increases DAS content in blood and reduces the concentration of heme-bound oxygen. Smoking increases DAS content in blood and reduces the concentration of heme-bound oxygen, carbon monoxide. The odd one out in the following is spleen and Peyer's patches. Secondary. Spleen and thymus are odd one out है तो ये. Liver and spleen. अया liver कहाँ से आ गया है बीच में? Thymus and Peyer's patches. अया. Spleen and Peyer patches. Secondary है. Spleen and thymus. एक secondary एक primary. Thymus and Peyer's patches. एक secondary. मुझे लगा क्या बताऊँ मुझे? Only 3. Spleen and Peyer patches. These are lymphoid tissue forming the secondary lymphoid organ. Spleen and thymus. The spleen is graveyard of RBC and thymus is the site of maturation of RBC. Hence, these form primary lymphoid organ. Thymus and Peyer's patches. These both are lymphoid tissue. Whereas 3, liver and spleen. Liver is not lymphoid tissue. Okay. Spleen is lymphoid. सुंदर है, सुंदर, अति उत्तम. Antigenic determinant site. Antigenic determinant site binds to which portion of the antibody molecules? Light chain, heavy chain, intermediate chain, plasma cell. अब मैं heavy chain में कर दूंगी ये. एक से ज़्यादा ऑप्शन राइट है क्या? Antigenic determinant site binds to which portion of antibody molecule? Light chain, heavy chain, intermediate chain, plasma cell. मैं भूल गई. 1, 2 and 4 होगा. 1 and 2. हाँ 1 and 2 ही है. इसको ऐड करो. Antigen binding site. Antigenic determinant site binds to which portion of antibody molecule? Light and heavy. Binding site.
disulfide linkage, okay. Antigen binding site. Small protein. A drug called morphine is obtained from Cannabis sativa, Papaver somniferum. Which of the following is autoimmune disease? Graves' disease, correct? Rheumatoid arthritis, 1 and 3. Graves' disease, rheumatoid arthritis, myasthenia gravis, and one more is there, psoriasis and ये जो होता है ना विटलिगो है ना. हाँ सही बताया तुमने. डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 एंड rheumatic fever. पता नहीं ये मैंने क्यों लिखा. autoimmune disorder, okay. Diabetes mellitus type 1 and rheumatic fever, myasthenia gravis, psoriasis, vitiligo, Graves' disease, myasthenia gravis, Graves' disease, psoriasis and vitiligo. 1, 2, 3, 4. Myasthenia gravis, psoriasis, vitiligo, Graves' disease. 4 and this is 5. Rheumatoid arthritis. This is 6. Diabetes mellitus 1. Which of the following is not a lymphoid tissue? Pancreas. Which of the following following are the differences between innate immunity and acquired immunity? Select the option with the correct pair of differences. Innate immunity, it is inherited by an organism from its parents and protect it from birth throughout life. It is inherited by an organism from its parents. By birth ही होता है. It is acquired by an organism after birth. It is also called specific immunity. आया ना, non-specific होता है ना. It is also called, 2 नंबर का गलत हो गया. ये वाला specific होता है, ये non-specific होता है. Acquired immunity specific, innate immunity non-specific. It consists of, innate immunity. It consists of different types of barriers that prevent the entry of foreign organisms. Isn't correct? It consists of specialized cells, T cells and B cells. And antibodies that circulates in body fluid. T cells and B cells. हाँ ये वाला तुम्हारा यो humoral वाला होगा ना. T cells तुम्हारा होगा. T cells कहाँ होगा? Cell mediated में होगा. And antibodies that circulates in body fluid. अच्छा ठीक ही है. It is also called non-specific immunity. It is also called specific immunity. 2 नंबर ही wrong है. लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है. 2 नंबर ही सिर्फ wrong है वाला तो. By an organism from its parent. Inherited नहीं है ना. 2 and 1 होगा. तो 2 and 3 है. 1 and 3 है. वो करेक्ट चूज करना था ब्रो. करेक्ट चूज करना था. क्या कर दिया? करेक्ट चूज करना था. अय्या तूने तो. That prevents the entry of foreign agents. करेक्ट चूज करना था ना ब्रो. Nicotine and alkaloid, correct? Alkaloid, okay? Stimulates adrenal gland, adrenal. B and C तो गया. To release adrenaline and non-adrenaline into the blood circulation, both of which increase blood pressure and increase heart rate. अच्छा ये हो गया. Heart rate. Smoking is associated with increased incidence of cancer of lungs, urinary bladder and the throat. Bronchitis. Urinary bladder नहीं लिखा है उसमें. क्या लिखा है बोलो तो. Urinary bladder ही लिखा है. Throat. Bronchitis, emphysema, coronary artery disease. Coronary artery और heart disease लिखा है. Coronary heart disease. Artery नहीं लिखा है. Coronary heart disease, gastric ulcer, etc.
तू इसमें हक देगी बहन. Cancer of lungs, urinary bladder, emphysema, throat bronchitis, emphysema, coronary heart disease, and gastric ulcer. It's okay, bro. Tobacco chewing is associated with increased risk of cancer of the oral cavity. Smoking increases CO, carbon monoxide in the blood and content CO, carbon monoxide content in blood and reduces the contraction of the reduces the concentration of heme-bound oxygen. In a patient suffering from malaria, hemozoin is released from by RBC, erythrocytes. The role of helper T cell is to inhibit immune response, stimulate immune response. तूने कितना सही किया है तो. Good job, Hima, good job. The role of helper T cell is to stimulate immune response. Histamine and serotonin, ये तो तू भूल जाएगी. An essential long-acting antibody representing about 75% of the antibody that is able to pass across the placenta is an essential long-acting antibody representing about 75% of the antibody that is able to pass across the placenta is. मुझे लगा IgG होगा ना. पहले IgA करो तो IgG. Serum antibodies of IgG, most common type of antibody. Okay. Representing about 75% of antibody, IgG. Passing through human placenta, passes across the placenta. Passes across ACCROSS across the placenta. Passes across the placenta. Cerebral malaria is caused by Plasmodium. Aya. All of this तो नहीं होगा Vivex. Ay, falciparum. Cerebral malaria. Plasmodium falciparum. Malaria is caused by Plasmodium. Cerebral, cerebral, cerebral malaria. Cerebral malaria. Okay, malaria. Identify the correct pair representing the causative agent of typhoid fever and the country may treat test typhoid. It's Vidal test. Streptococcus pneumonia na Salmonella typhi. Correct. Yes. I think it will be okay. Maybe timer pause कर रही हूँ. Okay. I have to do something. I'll come back.
Response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. The substances to which an immune response is produced are called allergens. The antibodies produced to this are IgE type. Common example of allergens are mites, dust, pollen, mites in dust, pollens, animal dander. Sneezing, watery eye, runny nose and difficulty in breathing. Sneezing, watery eyes, runny nose, running nose. Sneezing, achoo, watery eyes, running nose and difficulty in breathing. Allergy is due to the release of chemicals like histamine and serotonin. Allergy is due to the release of chemicals like allergy. कुन चाहिँ केमिकल्सको कारणले हुँदा हिस्टामिन र सेरोटोनिनको लागि हुन्छ. हिस्टामिन एन्ड सेरोटोनिन. Histamine and serotonin from the mast cell. Allergy is due to the release of chemicals like histamine and serotonin. Okay, histamine IG mast cell activate गर्छ. This is due to the release of chemicals like histamine and serotonin. Serotonin. Release histamines, bronchoconstriction and vasodilation. For determining the cause of allergy, the patient is exposed to or injected with very small doses of possible allergens and the reaction studied. The use of drugs like antihistamine, adrenaline, and steroids quickly reduces the symptoms of allergy. Somehow, modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitive to allergens. Provided early in life. Allergens. Helpers T cells activate B and T lymphocyte to become plasma cell. And active reduction in antibiotics. Plasma cells active reduction in antibiotics. Excuse me, mild now. 50% of lymphoid tissue. 50% of lymphoid tissue in human body. Lymphoid tissue. Allergy. Allergy. Due to release of RELEAS, a release of histamine and serotonin by mast cell. Controlled antihistamine, adrenaline. एक तो हमारा एंटीहिस्टामिन होगा, दूसरा एड्रेनालिन होगा, तीसरा होगा स्टेरॉइड्स. ROIDS, steroids quickly reduces the symptoms of allergy. Antihistamine, adrenaline and steroids. Antihistamine, adrenaline and let me check. 12th का हो गया bio का exam. Yeah, I'm studying for biology. Yeah, correct. Steroids, antihistamine, adrenaline.
and steroids. Antihistamine, adrenaline and steroids. एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स 25 मार्च को। मैंने उसको इसलिए आंसर नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि वो चला गया है। तुम आ गए उसको रिप्लाई करने के लिए कहीं से। एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड। ओके, मास्ट सेल, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, steroids, antihistamine, and one more is there, adrenaline. Okay, ecosystem, biodiversity and conservation, ecosystem. That was your choice, right? So now why you are complaining? Environmental issue, biodiversity and conservation, habitat loss, ecosystem, owned by East, translate, biodiversity and conservation. Biodiversity and conservation, biodiversity, ecosystem, then we have biodiversity and conservation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Environmental issue is not coming. Ecosystem. ना अनीट, जब तक लिखोगे नहीं याद नहीं होगा। लिख ही रहे हैं भाई साहब, हर कोई आ जाता है ज्ञान देने। नीट 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 नीट। मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर दे रही हूँ, तुम लोगों के कमेंट देख के मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रही हूँ। जब ब्रेक आएगा तब ऑन कर दूंगी। ऐसे ही मैं बुद्धू इंसान, तुम लोग और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देते हो। इकोसिस्टम, वन सोर्ट इकोसिस्टम। मैं ब्रेक में 10 मिनट बाद ब्रेक है तब वो चैट ऑन कर दूंगी। ओके, अभी नहीं करूंगी प्लीज, तुम लोग समझ जाना। अय्या, आई थिंक मेरा ना वो नहीं है, वाईफाई नहीं है। आ गया है शायद, क्लास 12 आंसर।
सीरीज का आज ये सेकंड क्लास है, इसमें हम इकोसिस्टम को खत्म करेंगे। इकोसिस्टम के आज मैंने नोट बनाए हैं, हार्डली 45 पॉइंट्स बने हैं टोटल में। तो वो 45 पॉइंट जैसे ही तुम रिवाइज कर लोगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा नीट 2024 में जो तुम जाओगे तो कि कोई भी क्वेश्चन तुम गलत करके आओगे, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, सिर्फ 45 पॉइंट्स में पूरा चैप्टर कर लेंगे, 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर करेंगे। उसके बाद जब आप पीवाईक्यूज लगाओगे तो आप देखोगे कि आप सब कुछ ही सॉल्व कर पाएंगे। देखो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बनाया है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करवा लो। अगर आपके फ्रेंड्स ने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले इकोसिस्टम की डेफिनेशन है एनसीईआरटी में, कहा गया है कि इकोसिस्टम जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है। तो आपको एक पीवाईक्यू बन सकता है कि ये फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर क्या है। इकोसिस्टम तब बनता है जब एक स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स दूसरे स्पीशी के ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करते हैं और अपनी ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करते हैं, प्लस वो अपने नॉन लिविंग एबायोटिक फैक्टर्स से भी इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि रेन, जैसे कि सॉइल, इन सब चीजों से इंटरेक्ट करते हैं तो इकोसिस्टम बनता है। मतलब लिविंग कंपोनेंट्स के साथ एक ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहा है, प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ जब एक ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहा है, तो इस टोटल चीज को इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम जो है, हम इंटायर बायोस्फीयर को एक ग्लोबल इकोसिस्टम भी मान सकते हैं, ऐसा आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फिर इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल हो सकता है, जो कि जमीन सॉलिड जमीन पर है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। एक्वाटिक इकोसिस्टम हो सकता है जो कि पानी में है, पानी की कोई भी बॉडी हो, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे वो एस्चुरी हो, चाहे वो लेक हो, चाहे वो रिवर हो। या मैन मेड और नेचुरल इकोसिस्टम में भी हम इकोसिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट, वो खुद से बना हुआ इकोसिस्टम है। मैन मेड जो हमने बसाया हुआ इकोसिस्टम है, जैसे कि आपका फील्ड हो गया, जैसे कि आपका एक्वेरियम हो गया। Ecosystem, functional unit of nature. Functional unit of nature is ecosystem. Okay, functional unit of nature where living organisms interact among themselves. Functional unit of PYQ. Functional unit of nature, ecosystem. Functional unit of nature, ecosystem. Ecosystem, functional unit of nature. This is like ecosystem. Functional unit of nature. Nature. Ecosystem. Where living organisms interact among themselves, also with surrounding physical environment. Okay, where living organisms interact among themselves and with physical environment. Interaction of living organism among themselves, also with surrounding physical environment. Ecosystem, functional unit of nature where living organism interacts with themselves among themselves and environment. Okay, surrounding environment, surrounding physical environment. Okay. Ecosystem varies greatly in size, small ponds to large forest or sea. Many ecologists regarded the entire biosphere as a global ecosystem. Entire biosphere can be regarded as global ecosystem. Entire biosphere. Global ecosystem. Global ecosystem, okay. उसके बाद अगर आप अपना एनसीईआरटी का सेट terrestrial ecosystem, forest, grassland, terrestrial and aquatic. Forest, grassland, desert are some of terrestrial ecosystem. Forest, grassland and desert. Forest, grassland, desert. Forest, grassland, desert. Terrestrial, aquatic, terrestrial ecosystem. Then we have lake, pond, wetland, river and estuary. River where joins to sea are some example of aquatic ecosystem.
Crop field and aquarium may also be considered as man-made ecosystem, artificial ecosystem. This is a natural ecosystem, है ना? Natural ecosystem. Crop field, aquarium, cropland and ecosystem. Example, zoo. Ecosystem has least genetic diversity. किट पेज बदलोगे, ये सब आपका फर्स्ट पेज का पार्ट कवर हो गया है. तो आपको Wait. We will first look at the structure of ecosystem in order to appreciate the input, productivity, transfer of energy, food chain. We will first look at the structure of ecosystem in order to appreciate the input, productivity, transfer of energy, food chain, wave, nutrients, cycling and output, degradation and energy loss. We will also look at the relationship, cycle, chains, waves that are created as the result of this energy flow within the system and their interrelationship. Cropland and ecosystem has least genetic diversity. डेफिनेशन दी हुई है स्ट्रैटिफिकेशन की. स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? एक इकोसिस्टम में ecosystem coined by Easy Tansley. Cropland and ecosystem has least genetic diversity. वर्टिकली स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसे हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं. जैसे कि अगर हम फॉरेस्ट में देखें तो सबसे ऊपर हमें ट्रीज दिखते हैं, उससे नीचे वाले एरिया में हमें यहाँ पे श्रब्स दिखते हैं, फिर हमें यहाँ पे हर्ब्स और ग्रासेस दिखते हैं. तो ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज है एक इकोसिस्टम में, उसे हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स. कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 कंपोनेंट. Entire biosphere, global ecosystem. Entire biosphere, global ecosystem. Structure and function. Stratification. Vertical distribution of different species occupying. Vertical distribution of different species occupying different level called stratification. Stratification. Example: tree, herb. Vertical distribution. Forest. Vertical distribution of different species in different occupying different levels. Different species occupying different level. Vertical distribution. Different species, different levels. Vertical distribution of different species. Vertical distribution of different species occupying different levels. Top vertical strata, second and bottom layer grasses. Okay. Vertical strata. Top vertical strata. Top vertical strata. Bottom layer. Vertical distribution of different species and different levels, occupying different levels. कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, जो कि हम एक एक करके पढ़ेंगे. प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. एक एक करके हम इसके बारे में बात करेंगे. कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग बात करेंगे. Component of ecosystem: productivity, decomposition, energy flow and nutrient recycling. Okay, component of ecosystem. These are component of ecosystem. Same to function as a unit. Productivity, decomposition, energy flow and nutrient. No, not productivity. P10. Component of ecosystem. P10.
eco computer class co-owner. Peden, D-E-N. Productivity, decomposition, energy flow, and nutrient recycling. Nutrient cycling, energy flow. Nutrient cycling, energy flow, decomposition, productivity, decomposition, energy flow, nutrient cycling component. Okay. Ecological component of ecosystem components, ecosystem component, Peden. Productivity, decomposition, energy flow, and nutrient recycling. प्रोडक्टिविटी, अच्छा ये पॉन्ड में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि पॉन्ड एज ए इकोसिस्टम कैसे वर्क करेगा, कि इसमें ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स भी हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं, देन कंज्यूमर्स हैं जो कि जू प्लैंक्टन्स हैं, डीकंपोजर्स हैं जो कि फंजाई, बैक्टीरिया, सभी के सभी इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स और मूवमेंट ऑफ इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। एनर्जी जो है इकोसिस्टम में वो यूनिडायरेक्शनल होती है। अब आ जाओ प्रोडक्टिविटी पे। ओके, अ पॉन्ड autotrophic component, four basic shallow water body in which all the above mentioned four basic components of an ecosystem are well established. Four basic components well established. Okay, abiotic components is the water with all the dissolved inorganic and organic substances. Autotrophic component, phytoplankton, some algae, floating, submerged, and marginal plant found in each. Autotrophic component, floating, submerged plants, algae, phytoplanktons, algae, submerged, and marginal plants. Phytoplanktons, some algae, the floating and the submerged. Okay. Marginal plants found at the edge. The consumers are represented by the zooplanktons, the free swimmings, and the bottom dwelling form. Okay, zooplanktons are consumer. Free zooplanktons. Okay, decomposers, fungi, bacteria, flagellated, especially abundant in bottom of the pond. Flagellated, abundant in the pond. Fungi, bacteria, flagellated. Okay, fungi, bacteria, flagellated especially are abundant in the bottom of the pond. Okay, the system performs all the function of an ecosystem and the biosphere as a whole. That is conversion of inorganic, unidirectional, PYQ. Very important. Unidirectional movement of energy towards higher tropic level, and dissipation and loss of heat to the environment. ये हम लोगों का कौन सा वाला स्लॉट कंप्लीट हो गया है? बोलो, मैंने चैट्स ऑन कर दिया है। 5th शायद कंप्लीट हो गया है। 5th ही था ना ये सेशन? स्लॉट 5th था, मैंने नहीं लिखा क्या? हाँ, स्लॉट 5 ही था। कोई मैसेज सेक्शन ऑफ था क्या? हाँ, मैंने कर दिया। लोग मैसेज कर रहे थे, मैं कंफ्यूज ही हो रही थी।
वो ग्लिच नहीं है, मैंने टेलीग्राम ही अनइंस्टॉल कर दिया। मैं तो नहीं सो सकती, मेरा तो अभी 5 घंटा ही हुआ है, मिनिमम 10 घंटा तो पढ़ ही के ही सोऊंगी। आई थिंक सुबह के 10 बजे सोऊंगी। मैंने बहुत सारा कॉफ़ी पिया है, अभी नींद भी नहीं आएगा। फर्स्ट फूड नेक्स्ट रीड, एग्जैक्टली शारू। बाय बाय सर्वजीता, अब चलती हूँ। ओके, गुड लक, अच्छे से पढ़ना। हाँ, लेकिन मुझे ख़राब लगेगा अब अकेले पढ़ने में, तुम भी जा रही हो तो। सब लोग आजकल जल्दी जल्दी सोने लगे हैं। एक चक्कर लगा के आती हूँ, फिर स्लॉट 6 स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैं नहीं सोने वाली हूँ आज। 10 घंटा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए। गेस व्हाट, श्री इज देयर। पहले बताना चाहिए था ना, मैं सैड हो रही थी। कोई नहीं है ऐसा सोचिए। यू आर देयर। हाँ, कुछ बोलने वाले थे क्या? तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि तुम हो। आहा हा, exploring the amazing mind-blowing facts here. Astaghfirullah, we are not supposed to say that. One Piece fan, लूफी का पीपी में अच्छा वाला पिक सिलेक्ट किया। नो टेक ब्रेक नहीं, मैं 5 मिनट ब्रेक लेके आऊँगी, क्योंकि मैं ना यहाँ पर बैठते बैठते मेरा पता नहीं पैर ही सूज जाता है। वैसे भी अभी तो सुबह तक पढ़ना है, तो 5 मिनट से क्या ही होगा। अभी आई।
Thanks for being so nice, Amit Tripathi. Shri, are you there? Are you there, Shri? यो जैकी, खत्म हो गया है मेरा चार्ज। 20% से नीचे आ गया है, मुझे नोटिफिकेशन मिल गया, 18 हो गया है। कब तक एंड होगा स्ट्रीम? आज एंड नहीं होगा, मुझे और 5 घंटा और पढ़ना है। अभी मेरा सिर्फ 5 ही स्लॉट कंप्लीट हुआ है, मिनिमम 10 तो पढ़ना होगा ना। अगले 50 दिन में एग्ज़ाम है। सुबह उठना, दिन भर सोऊंगी, फिर 4 बजे जाऊंगी। कल भैया नहीं आएंगे ना, तो उनका क्लास में प्रॉक्सी देना है। नीट की तैयारी कर रही हूँ। एक मिनट, मैं इसको फिक्स कर देती हूँ कि मेरा पास ना चार्ज नहीं है। कनेक्ट करूँ तो ज़रा, शायद अब हो जाएगा। तुम्हें अच्छा व्यू मिलेगा अब मैं क्या पढ़ रही हूँ ये देखने के लिए, है ना? मैं तो बस 3 बजे तक, बस उसके बाद सुबह 11 से। ओके, गुड लक अगेन। ओके श्री, ये कौन सा स्लॉट रहेगा? स्लॉट 6 रहेगा। ओके, स्लॉट 6। स्लॉट 6 60 मिनट, 2:39, 2:45 to 3:45 तक करना begins. Study till 3:45. Study till 3:45. You walk my movies. Namaste Jawani. ट्वेल्थ क्लास में परसेंट थी, परसेंटेज। यू आर आस्किंग अबाउट माई परसेंटेज? वैसे तुम्हें सही से लिखना पड़ेगा, परसेंट का स्पेलिंग ऐसा नहीं होता है, PRCENT होता है। मेरा परसेंटेज ज़्यादा अच्छा नहीं था, ये था 74.2। मैंने थोड़ी देर पहले भी यही बात किसी और को बताया था। दलचंद शायद उसका नाम, दलचंद, दलचंद सिंह। ओके श्री, आई बी वेटिंग फॉर यू। एनीवेज कमेंट्स ऑफ कर दूंगी। ये दिवेश शर्मा ने कुछ तो लिखा है जो मुझे समझ में नहीं आया। दिवेश
दूसरी बार तब मुझे समझ में आया तो मैं तुम्हें जवाब जरूर दूंगी। अभी मैंने ऑफ कर दिया है, वी विल स्टडी, वरना तुम लोग भागोगे अगर चैट्स खुला रख दिया तो। कौन ही केयर करेगा भाई, गो टू हेल। क्या क्वेश्चन आएगा? प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, और इनमें रिलेशनशिप क्या होता है? सुनो, पहली बात तो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में क्या फर्क है? प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में क्या फर्क है? प्रोडक्टिविटी है बेसिकली आपको ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करना है। कौन ऑर्गेनिक मैटर कौन प्रोड्यूस करेगा सबसे पहले? प्रोडक्टिविटी। जनरली सबसे पहले जब इकोसिस्टम में ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है तो वो कैसे होता है? सनलाइट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस होके यहाँ पे ग्लूकोज बनता है जो कि एक ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करना है हमने। अब पर मीटर स्क्वायर में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है? ऑर्गेनिक मैटर को आप ग्राम में देख सकते हो या किलो कैलोरीज में देख सकते हो। ग्राम में देख सकते हो, किलो कैलोरीज में देख सकते हो। पर मीटर स्क्वायर कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? अब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क है? प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क है? प्रोडक्टिविटी रेट है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। तो जब भी रेट की आप बात करोगे तो पर ईयर आ जाएगा। अगर मैं प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस बताऊंगी तो प्रोडक्टिविटी में पर ईयर के हिसाब से भी बात आ जाएगा, पर ईयर आ जाएगा, ठीक है? तो जो प्रोडक्टिविटी है वो रेट है, प्रोडक्शन जो है अमाउंट है। अगर प्रोडक्शन की बात होगी तो पर ईयर नहीं आएगा, सिर्फ कितना ग्राम एक मीटर स्क्वायर में ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूंगी तो कितना ग्राम एक मीटर स्क्वायर में ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है एक ईयर के अंदर रेट आ जाएगा, ठीक है? इसमें ग्राम या किलो कैलोरीज कोई भी यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे ग्राम पर मीटर स्क्वायर प्लस ईयर भी यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंस है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में। समझ में आ गया? प्रोडक्टिविटी। रेट। photosynthesis, together biomass production, organic matter, glucose, 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 ये रेट है, पर ईयर आएगा इसमें, इसके एंड में। यहाँ पे रेट नहीं है, ये अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है जो कि एक मीटर स्क्वायर में प्रोड्यूस हो रहा है किसी इकोसिस्टम में। यहाँ पे पर ईयर नहीं है। ये बात पता चल गई? अब प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करूँ तो मैं, ठीक है, रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो ओरिजिनली एक इकोसिस्टम में T1 लेवल पे जो प्रोड्यूसर्स बैठे हैं वो कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। लेकिन सारे जो ग्रॉस प्राइमरी एक इकोसिस्टम में T1 लेवल पे जो प्रोड्यूसर्स बैठे हैं वो कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, वो ग्रॉस। यहाँ पे रेट नहीं है, ये अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है जो कि एक मीटर स्क्वायर में प्रोड्यूस हो रहा है किसी इकोसिस्टम में। यहाँ पे पर ईयर नहीं है। ये बात पता चल गई? अब प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करूँ तो मैं, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी
net primary productivity, gross primary productivity, net primary productivity. Okay, primary productivity is रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो ओरिजिनली एक इकोसिस्टम में T1 लेवल पे जो प्रोड्यूसर्स बैठे हैं वो कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। लेकिन सारी जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारा का सारा कंज्यूमर्स को के खाने के लिए नहीं होता, वो प्रोड्यूसर्स खुद भी उसे यूज कर लेते हैं। जो प्रोड्यूसर्स खुद उसे यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी लॉसेस। रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ह्यूज अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन। अगर जीपीपी में से रेस्पिरेटरी लॉसेस को निकाल दो तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बचती है। नेट प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है वो आगे जाके कंज्यूमर्स खा सकते हैं क्योंकि वो कंज्यूमर्स के लिए T2 लेवल के लिए अवेलेबल है। अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन, अवेलेबल जो प्रोड्यूसर्स खुद उसे यूज करते, एक इकोसिस्टम में T1 लेवल पे जो प्रोड्यूसर्स बैठे हैं वो कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। लेकिन सारी जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारा का सारा कंज्यूमर्स को के खाने के लिए नहीं होता, वो प्रोड्यूसर्स खुद भी उसे यूज कर लेते हैं। जो प्रोड्यूसर्स खुद उसे यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी लॉसेस। रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ह्यूज अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन। अगर जीपीपी में से रेस्पिरेटरी लॉसेस को निकाल दो तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बचती है। नेट प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है वो GPP, gross primary productivity. Gross primary productivity of the rate of production. Rate of production, it is the rate of organic matter, production of organic matter during photosynthesis. A considerable amount of GPP is utilized by plants. Considerable amount of GPP, huge amount of GPP, gross primary productivity, is utilized by plants in respiration. Utilized by plants themselves. Respiration, gross primary productivity, huge amount of GPP is utilized in respiration. Net primary productivity, NPP. Respiratory losses is equals to NPP. Net primary productivity. Respiratory losses are NPP, net primary productivity. Is the available biomass for the consumption of available biomass for the consumption of secondary, okay, heterotrophs, herbivores and decomposers, वो आगे जाके कंज्यूमर्स खा सकते हैं क्योंकि वो कंज्यूमर्स के लिए T2 लेवल के लिए अवेलेबल है। अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अब ये आ गया कंज्यूमर्स के दौरान। अब एक रैबिट अगर घास खाएगा तो वो रैबिट पहले छोटा है और वो रैबिट फिर बड़ा हो जाएगा तो इसका बायोमास भी तो बढ़ रहा है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एट T2 लेवल। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एट T2 लेवल, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आ गई। प्रोडक्टिविटी का टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। यहाँ से बहुत सारे PYQ आते हैं। जीपीपी और एनपीपी में रिलेशनशिप क्या होता है ये बार बार पूछते रहते हैं। What I think makes ISOs unique is, first of all, the students. They're really diverse, but they very quickly start blending together in this new community. We made a lot of friends. They're all from all the country, and I would miss them a lot. But we made like really strong bonds. Then, एनुअल एनपीपी होल बायोस्फीयर की पूरी हमारी दुनिया की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है? 170 बिलियन टन। उसमें से ओशंस की बहुत कम है, हालांकि ओशन का वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन बाय द कंज्यूमर्स। Secondary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter.
Rate of formation of new organic matter by consumers. Rate of formation of new organic matter by consumers. Okay. प्रोडक्टिविटी का टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। यहाँ से बहुत सारे पीवाईक्यू आते हैं। जीपीपी और एनपीपी में रिलेशनशिप क्या होता है? बड़ा हो जाएगा तो इसका बायोमास भी तो बढ़ रहा है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एट T2 लेवल। रेट ऑफ प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है वो आगे जाके कंज्यूमर्स खा सकते हैं, क्योंकि वो कंज्यूमर्स के लिए T2 लेवल के लिए अवेलेबल है। अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉन्स। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? अब ये आ गया कंज्यूमर्स पे। अब एक रैबिट अगर घास खाएगा तो वो रैबिट पहले छोटा है और वो रैबिट फिर बड़ा हो जाएगा, तो इसका बायोमास भी तो बढ़ रहा है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एट T2 लेवल। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एट T2 लेवल, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। Rate of formation of new organic matter. Okay. Rate of biomass increase. Increase. T2 level. Increase in T2 level. प्रोडक्टिविटी का टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। यहाँ से बहुत सारे पीवाईक्यू आते हैं। जीपीपी और एनपीपी में रिलेशनशिप क्या होता है? ये बार बार पूछते रहते हैं। एनुअल एनपीपी होल बायोस्फीयर की, पूरी हमारी दुनिया की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है? 170 बिलियन टन। उसमें से ओशंस की बहुत कम है, हालांकि ओशन का 70% ऑफ एरिया है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ 55 बिलियन टन है। और लैंड की प्रोडक्टिविटी बाकी बची हुई 115 बिलियन टन है। उसका रीजन पूछ रहा है वो, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन का रीजन क्या है? एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछ रहा है भैया, बहुत लो न्यूट्रिएंट कंटेंट, खासकर नाइट्रोजन कंटेंट इसका बहुत कम रहता है। नाइट्रोजन कंटेंट बहुत कम रहता है, तो जिससे कि लो प्रोडक्टिविटी आती है ओशन। Annual NPP, net primary product. Annual net primary product. Productivity. Net primary productivity, GPP minus R, NPP ना. Whole biosphere is approximately 170 billion tons dry weight of organic matter. ओसन को 55 million और billion ton, billion 55 billion tons from ocean and 115 billion tons of this 115 की को billion tons tons 50 billion tons by land. Yeah, land. Reason for low productivity of ocean in with your teacher: sunlight, lack of biodiversity and nutrient, nitrogen content, no low nutrient content, and to nitrogen content and content. Sunlight, lack of biodiversity. इसकी अब आ जाओ अगले टॉपिक पे। आपके पास 4 कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम थे: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और एक और था क्या? एनर्जी। Energy and nutrient फिर cycling. दूसरे पे आ गए decomposition पे। इससे Productivity, 2023 में भी पीवाईक्यू आया है और 2022 में भी पीवाईक्यू आया है। दोनों बार पीवाईक्यू आया है, इसको हम ध्यान से सुनेंगे। डिकम्पोजिशन क्या है? Fragmentation का मैं हक के आई थी तब. ऑर्गेनिक मैटर कैसा? जनरली डेड ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है यहाँ पे। डेड ऑर्गेनिक मैटर को हम डेट्राइटस भी कहते हैं, जिसमें प्लांट और एनिमल के डेड पार्ट्स आएंगे, ठीक है, एनिमल्स का फीकल मैटर ये सब आएगा। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या है? जैसे ग्लूकोज है उसमें, जैसे उसमें प्रोटीन है। अब ये तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर हो गया। उसका ब्रेकडाउन जब सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में हो जाएगा तो इसको डिकम्पोजिशन कहेंगे। इनऑर्गेनिक मैटर जैसे कि आप CO2 बन गया, कुछ H2O बन गया, कुछ कैल्शियम आयन निकल गया, कुछ पोटेशियम आयन निकल गया, कुछ, अब ये तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर हो गया। उसका ब्रेक, डेड ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है यहाँ पे। डेड ऑर्गेनिक मैटर को हम डेट्राइटस भी कहते हैं,
जिसमें प्लांट और एनिमल के डेड पार्ट्स आएंगे, ठीक है, एनिमल्स का फीकल मैटर ये सब आएगा। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या है, जैसे ग्लूकोज है उसमें, जैसे उसमें प्रोटीन है, अब ये तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर हो गया। उसका ब्रेकडाउन जब सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में हो जाएगा तो इसको डीकम्पोजिशन करेंगे। इनऑर्गेनिक मैटर जैसे कि आप CO2 बन गया, कुछ H2O बन गया, कुछ कैल्शियम आयन निकल गया, कुछ पोटेशियम आयन निकल गया, कुछ The important step is the process of fragmentation, leaching, catabolism, humidification, and mineralization. Anorganic, simple inorganic matter. Decomposition. Decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water, nutrients, and the process is called decomposition. सोडियम आयन निकल गया, कुछ फॉस्फेट आयन निकल गया। ये जब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं, जब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में ये टूट जाएगा तो इस प्रोसेस को हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। डीकम्पोजिशन का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो डेट्राइटस है, व्हिच इज द डेड एनिमल एंड प्लांट पार्ट्स। स्टेप ऑफ डीकम्पोजिशन आपने याद करना है फल्चम से, FLCHM, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिडिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। ये 3 स्टेप एक साथ रहते हैं, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ये ऑल स्टेप ऑपरेट साइमल्टेनियसली। उसके बाद ह्यूमस बनता है और उसकी फिर मिनरलाइजेशन होती है। हर स्टेप कौन करता है और उसका क्या मतलब होता है आपको क्लियरली पता होना चाहिए। पहला स्टेप फ्रैगमेंटेशन। Dead plants and animals remains raw material to decomposition detritus. Dead remains of plant and animals raw material for decomposition. Fulcrum, FLCHM, fulcrum. Fulcrum. Fragmentation, leaching, catabolism, humidification, and mineralization. Occurs simultaneously. OCCUR occurs simultaneously. Fragmentation, leaching, and catabolism. Fragmentation, leaching, and catabolism. Fulcrum, FLC. Fragmentation, leaching, and catabolism. Mineralization, humidification, mineralization. Fulcrum, FLCHM. Humidification and mineralization. Humidification and mineralization. सीधी सी बात है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अभी देखो केमिकल ब्रेकडाउन नहीं है, ये बेसिकली फिजिकल ब्रेकडाउन है, फिजिकल ब्रेकडाउन है, ठीक है। ये अर्थवर्म जैसे डेट्राइटिवोर्स करते हैं, इसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। लीचिंग क्या होता है, इस छोटे छोटे टुकड़े में से कुछ जो मिनरल्स हैं वो सॉइल के अंदर जाके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, सॉइल के अंदर जाके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और ये फिर अवेलेबल नहीं होंगे यूज के लिए, अनअवेलेबल सॉल्ट्स के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, इसे हम लीचिंग कहते हैं। वाटर soluble inorganic nutrients go down with water into the soil horizon and precipitate as मतलब कि unavailable salts। कैटाबोलिज्म क्या है, इसके ऊपर फिर बैक्टीरिया वगैरह का एक्शन भी होगा, बैक्टीरिया फंजाई का एक्शन होगा और इसको सिंपल मटेरियल में तोड़ना है, हमने CO2 में तोड़ना है, वाटर में तोड़ना है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में तोड़ना है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में तोड़ना है, इसको हम कैटाबोलिज्म कहते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया और फंगस की एक्टिविटी से होगा। बैक्टीरिया एंड फंजाई, okay. Detritivores, earthworm breakdown detritus into smaller particles. Detritivores break down detritus into smaller particles. This is called fragmentation. Fulcrum, FLCHM, FL. Fragmentation, leaching, LC. Catabolism, CH. Humidification and mineralization. 5. Fulcrum. Simultaneous. Earthworm breakdowns the detritus into smaller particles. This process is called fragmentation. Then leaching. By the process of leaching, water-soluble inorganic nutrient. Water-soluble inorganic nutrients goes down into the soil horizon and gets precipitated as unavailable salts.
gets precipitated as unavailable salts. Bacterial and fungal enzymes degrade into smaller particles, degrade detritus into simpler inorganic substance. Okay, यहाँ पर smaller particles है, ये ना मैंने गलती की थी. Smaller particles break down detritus into smaller particles. Okay, detritus into smaller inorganic substances. Detritus into देखो simpler inorganic substances. Smaller simple inorganic substances. This process is called catabolism. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ना है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ना है, सिंपल स्मॉलर पार्टिकल्स में नहीं, किसमें, सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ना है, उसे कैटाबोलिज्म कहते हैं. यही तो तूने गलती की थी. हाँ मुझे पता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और स्मॉलर पार्टिकल्स. किसी का भला हो. एंजाइम्स डिग्रेड डेट्राइटिस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. उसके बाद जब ये तीनों चीजें हो गई, अब इसका ह्यूमस बन जाएगा, एक डार्क मटेरियल बन जाएगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप है ह्यूमिफिकेशन, इज फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस. ह्यूमस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस है. आई होप आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है. अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है. मैंने कल की क्लास के नोट्स डाल दिए हैं. यही नोट्स आपको नीट विद अस ऐप पे भी अवेलेबल है. आप वहां पे जाके ये ऐप ज्वाइन कीजिए. आपको पैसे नहीं लगेंगे ज्वाइन करने में, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. आप ये जाके वहां से भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. और मैं कोशिश करूंगी कि इस ऐप पे जल्दी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस फ्री में अवेलेबल करा दूं. डीपीपीज ऑलरेडी मेरी बनाई हुई हैंडमेड डीपीपीज वहां पे अवेलेबल है. आप ऐप डाउनलोड करके डीपीपीज वहां से वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. क्वेश्चन भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको फ्री में ही अवेलेबल करा दें, जितना मैक्सिमम हो सकता है. चलिए शुरू करते हैं. हाँ जी, तो डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस है ये, विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन. माइक्रोबियल्स को इजीली तोड़ नहीं पाते. देन ये डी होती है, इसकी बहुत स्लो रेट पे कोलॉइडल नेचर है, इसलिए इट एक्ट्स एज रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स. तो 1 2 3 4 पॉइंट्स आपको ह्यूमस के कैरेक्टरिस्टिक याद. Dark colored amorphous substances. Dark colored amorphous substances. Crystalline होता है, एक होता है amorphous, right? Amorphous substances. Dark colored, कस्तो कलर हुन्छ, डार्क हुन्छ. Amorphous substances. Humus एउटा भयो. Highly resistant to microbial action. Bacterial ले के गर्न सक्छ, destroy गर्न सक्दैन. High resistant to microbial action. Undergoes decomposition at an extremely slow rate. Undergoes decomposition at extremely slow rate. Undergoes decomposition at extremely slow rate. Undergoes decomposition at an extremely slow rate. तीनटा ही मात्रै छ त, चारटा चाहिँ colloidal. So act as a reservoir of minerals. Colloidal. Being colloidal. This is charge. Okay. Colloidal. It is colloidal. In nature, being colloidal in nature serves as a reservoir of nutrients. Okay, chatta humus. Amorphous, dark color substances. Then they are reservoir of nutrients. Highly resistant to microbial what? Action. Highly resistant to microbial action. Decomposes very slowly at the slow rate. Undergoes decomposition at extremely slow rate. Okay, being colloidal in nature, it serves as a reservoir of nutrition. Colloidal. Hiya, chemistry. देखेंगे. A mixture in which substance consisting of dispersed insoluble particles is suspended. A very finely divided substance which is scattered throughout another substance. Mineral reservoir. Okay. डार्क कलर का अमॉर्फस सब्सटेंस है, बहुत ज्यादा रेजिस्ट करता है बैक्टीरियल एक्शन वगैरह को, धीरे धीरे डिग्रेड होता है और रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स की तरह काम करता है क्योंकि इसका कोलॉइडल नेचर है. अब मिनरलाइजेशन क्या है? फाइनली इसके ऊपर इसको भी नहीं छोड़ेंगे, बैक्टीरिया वगैरह एक्ट करेंगे.
फंजाई एक्ट करेंगे अपने एंजाइम से और इससे को भी इनऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ देंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में तोड़ देंगे, जो कि लास्ट स्टेप है मिनरलाइजेशन। ठीक है जी। अब इस पे क्वेश्चन आया था, ये पीवाईक्यू आया था कि किस चीज से डिकम्पोजिशन फास्ट होती है, किस चीज से डिकम्पोजिशन स्लो होती है। 4 पॉइंट्स लर्न करने हैं। अगर इन दो Okay. The humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients occur by the process known as mineralization. Mineralization means humus breakdown by the inorganic nutrients means inorganic nutrients. Okay, decomposition is largely an oxygen requiring process. The rate of decomposition is controlled by दो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, दो डेट्राइटिस से रिलेटेड है। अगर डेट्राइटिस में लिग्निन और काइटिन ज्यादा है तो तोड़ना मुश्किल है, तो स्लो हो जाएगा डिकम्पोजिशन। अगर डेट्राइटिस में चीनी और नाइट्रोजन ज्यादा है तो इजी हो जाएगा तोड़ना, फास्ट हो जाएगा डिकम्पोजिशन। ये तो डेट्राइटिस से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स करो। अगर इन्वायरमेंट में गर्मी और मॉइस्चर है तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। आप लोगों ने देखा है, खाना अगर बाहर पड़ा है और गर्मियां हैं या बारिश है तो जल्दी खराब होता है। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फास्ट हो जाएगा। एनारोबिक कंडीशन, बिकॉज डिकम्पोजिशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, इट्स एरोबिक प्रोसेस। अगर एनारोबिक कंडीशंस बनेंगी सॉइल में तो ये स्लो हो जाएगा। ये इस पे आज मैंने एक रील भी बनाई है, तो देखना जल्दी आएगी कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है। आपको इंस्टा पे मिल जाएगी और यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। Are you a student diving into online videos and classes on platforms एक तो like सा वीडियो देखने YouTube, देते, एक Coursera, ऐड टपक Udemy, जाता है Google? उसमें। बैचेस +1 और Decomposition is largely oxygen requiring process. Okay, aerobic, AEROBIC, aerobic process decomposition. Aerobic process, oxygen requiring process. Detritus ma lignin and chitin heights are slow. The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factor. Chemical composition of detritus and okay, and climatic factors. In particular, climatic condition decomposition rate is slower and if detritus is rich in lignin. Decomposition rate is in a particular climatic condition. Decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin. Quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugar. Okay, temperature and soil moisture are the most important climatic factors that regulate decomposition through their effect on the activities of soil microbes. Temperature एक हो गया, दूसरा हो गया moisture. Warm and moist environment favors decomposition, whereas low temperature and anaerobiosis inhibit decomposition, resulting in build-up organic matter. No oxygen. Warm and moist environment decomposition fast. देखिए slow. Anaerobic condition में no oxygen सा बनी, slow. Low temperature. भैया +2 के आपके 22 से शुरू हो रहे हैं। बैचेस में आपको ऐसे, ये तो जैसे शॉर्ट नोट हो गए, इससे बहुत डिटेल वर्जन में पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल क्लियर करके आपको लर्न कराई जाएगी एक लाइन, प्लस आपको एनसीईआरटी रीड कराई जाएगी, आपने पीवाईक्यू करेंगे, प्लस मेरे हैंड में क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डिटेल के लिए मैं जल्दी वीडियो डाल दूंगी। यूट्यूब पर ड्रॉपर्स बैच आपका 13 मई से शुरू हो रहा है और उसकी रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी मैं ओपन करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी फ्लो, दूसरा टॉपिक आपका खत्म हो गया। कितना टाइम लगाया हमने करने में? हार्डली हमें 15 मिनट में 2 टॉपिक्स हमारे खत्म हो गए। 2 टॉपिक्स हमारे बचे हैं। एनर्जी फ्लो बचा है हमारा। तुम देख रहे हो कितने प्यारे नोट्स हैं, मतलब जब मैं इनको बना रही हूँ तो मुझे खुद को इतनी याद हो रही है कि यार बस इस चैप्टर में यही पढ़ना है और हमें ऐसे ही स्पेस होता है यार, क्या पढ़े। ये 40 पॉइंट ही तो है जो पढ़ने और क्या पढ़ना है। इनको लर्न कर लो, हमारे चैप्टर का एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये इस सीरीज का पर्पस ही यही है। और जो भी चैप्टर तुम आगे चाहते हो मेरे को बताओ, मैं इस सीरीज में डाल के ऐसे 40 पॉइंट में 50 पॉइंट में चैप्टर खत्म करने की कोशिश करूंगी। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी जो सन की रेडिएशन है, ठीक है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन रेडिएशन है, उसमें से सिर्फ 2 से
सॉरी इसमें से सिर्फ 50% से भी कम, लेस देन 50% इज पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, मतलब जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है। पार का भी सिर्फ 2% जो है वो प्लांट्स यूज करते हैं, यूज ऑफ पार। पार इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, रीजन या रेडिएशन, रेडिएशन, है क्या? रेडिएशन है मैम, रीजन है या रेडिएशन है, देखना चेक करना एक बार। रेडिएशन सही लिखा है आपने, रेडिएशन ही है। रीजन और रेडिएशन में चेक कर लेना, मेरे को याद नहीं है ये रेडिएशन होना चाहिए या रीजन होना चाहिए, चेक कर लेना एक बार एनसीईआरटी में, ठीक है? मैं भी कमेंट में लिख दूंगी। ये टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का 50% से कम है और उसमें से 2% जो है पार का वो प्लांट्स कैप्चर करते हैं। वो ही एनर्जी जो ये 2% है, वो ही एनर्जी T1 लेवल से, जो कि प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाती है, जो कि T2 लेवल होता है। वही एनर्जी T3 के पास जाती है। शेयर बनाना चाहती हूँ मैं, यहाँ पे शेयर बनाना चाहती हूँ, पता नहीं क्या बन गया, लाइन बनाना चाहती हूँ, ठीक है? यही एनर्जी आगे 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 पास होती है। क्या कर दिया मैंने? हाँ जी, यही एनर्जी आगे 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 पास होती है, और एनर्जी पूरी की पूरी आगे पास नहीं होती। ये जो 2% एनर्जी है पार की, वो आगे आगे पास होती है, और हमेशा सिर्फ 10% एनर्जी आगे पास होती है। इसको बोलते हैं 10% लो, सिर्फ 10%। 10% एनर्जी आगे पास होती है। इसको, इसका 10% यहाँ पे, इसका 10% यहाँ पे, इसको बोलते हैं 10% लॉ। और एनर्जी का मूवमेंट हमेशा यूनिडायरेक्शनल है। ये नीट का क्वेश्चन है कि एनर्जी का मूवमेंट क्या राउंड सर्कल में घूमती है एनर्जी, या सिर्फ यूनिडायरेक्शनल घूमती है? सिर्फ यूनिडायरेक्शनल घूमेगी एनर्जी। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी है थ्रू आउट द इकोसिस्टम, और हमेशा 10% ही अगले ट्रॉपिक लेवल पे जाता है। इसको 10% लॉ बोलते हैं। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ directional flow of energy, ENERGY, यूनिट 10%, वो भी 10% लॉ के साथ। 10% लॉ कहाँ है ये? 10% लॉ इस इतना जल्दी मैम यहाँ पर आ गई, गलत बात है मैम, गलत बात है। 10% लॉ यहाँ पर, ओनली 10% ऑफ द, ओके, एकदम गलत बात किया मैम आपने। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल फॉर ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लो 10% लॉ, only 10% of the energy is transferred to each tropic level from lower tropic level tropic level था, tropic level ठीक है जी। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी जो कि सन से पहले प्रोड्यूसर्स के पास आएगा। जितनी प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी आई, 2% लिया उसने पार का, 2% को फोटोसिंथेसिस किया, उसका सिर्फ 10% उसने आगे प्राइमरी कंज्यूमर को भेजा, फिर उसका 10% आगे सेकेंडरी कंज्यूमर को गया। इस तरीके से चलता रहेगा। This is small amount of energy sustain the entire living. All organisms are dependent for their food. Either directly or so find you find unidirectional flow of energy. ये तो एकदम बढ़िया चीज मिला। Unidirectional flow of energy from the sun to producers, consumers 10%. नो एनर्जी इज एवर ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली। जैसे अगर प्लांट है, मैंने एनर्जी है मेरे पास, मैंने सन की एनर्जी कैप्चर कर ली, तो हमेशा मेरे पास ट्रैप नहीं रहेगी। या तो मेरे को कोई खा के आगे ले लेगा, कंज्यूमर ले लेगा मेरी एनर्जी, या मैं मर जाऊंगा और डेट्राइटिस फूड चेन शुरू हो जाएगी मेरी बॉडी से, क्योंकि डेट्राइटिस, मेरी बॉडी डेट्राइटिस बन जाएगी जब मैं मर जाऊंगा। तो वहां से डीएफसी शुरू हो जाएगा। तो कभी भी एक ऑर्गेनिज्म में एनर्जी जो है हमेशा के लिए ट्रैप नहीं रहती, ठीक है? डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डेट्राइटिस फूड चेन। कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रॉफ भी कहते हैं, जो T1 लेवल होता है, इसको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है? जो उसके consumers heterotrophs.
it just producers, T1 producers, T1. The green plants and ecosystem terminology are producers. Death of an organism is the beginning of detritus food chain. कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रॉफ भी कहते हैं, जो T1 लेवल होता है, इसको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। फिर से once more. लगा मेरी एनर्जी, या मैं मर जाऊंगा और डेट्राइटस फूड चेन शुरू हो जाएगी मेरी बॉडी से, क्योंकि डेट्राइटस मेरी बॉडी डेट्राइटस बन जाएगी, मैं मर जाऊंगा, तो वहां से डीएफसी शुरू हो जाएगा। तो कभी भी एक ऑर्गेनिज्म में एनर्जी जो है हमेशा के लिए ट्रैप नहीं रहती, ठीक है। डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डेट्राइटस फूड चेन। फिर से गलत हो गया। Energy is trapped into an organism. No energy is trapped into an organism forever. Some are not exempt, does not have from the second law of thermodynamics. They need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require to counteract the universal tendency towards increasing disorderliness. The green plant in the ecosystem, कुछ नहीं होगा, it's okay. Green plant in ecosystem terminology are called producers. यहीं पर लिख दो तुम. Has 400 to 700 nanometer range of wavelength par. Okay. में एनर्जी जो है हमेशा के लिए ट्रैप नहीं रहती, ठीक है। डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डेट्राइटस food chain. यहीं पर death of an organism beginning detritus food chain weave. Okay. Death of an organism beginning to a beginning of detritus food chain. Death of organism is the beginning of detritus. Death of organism is the it's okay. सबको मुझे उसी की शक्ल क्यों याद आ रही है? जो मैं चाहूँ वो ही मिले तो नहीं, ये तो नहीं होगा ना। तो चेन ऑफ इंटरडिपेंडेंसी. No energy is trapped into an organism, remains in it forever. Okay. फूड चेन। कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रॉफ भी कहते हैं, जो T1 लेवल होता है, इसको प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है। जो उसके आगे सारे लेवल है उनको कंज्यूमर्स कहते हैं, उसके आगे सारे लेवल कंज्यूमर्स हैं। और एक ग्रेजिंग फूड चेन की अगर बात करें, ग्रेजिंग फूड चेन की बात करें, तो उसमें मैक्सिमम 4 लेवल हो सकते हैं, T1, T2, T3, T4। ऐसा क्यों 4 लेवल क्यों हो सकते हैं? सिर्फ क्योंकि भैया सिर्फ 10% एनर्जी इधर से इधर पास हो रही है। If they feed on the producers, the energy, the plant primary consumers, and if the animals eat other animals, which in turn eat the plants. The consumers that feed on herbivores are carnivores, or more correctly, primary carnivores. Those animals that depend on primary carnivores for food are labeled as secondary carnivores. A simple grazing food chain depicted below, GFC, grazing food chain. कितना होगा? Grazing food chain में 4. 10% इधर से इधर पास हो रही है, 10% इधर से। मैक्सिमम 4 लेवल हो सकते हैं, T1, T2,
ऐसा क्यों? 4 लेवल क्यों हो सकते हैं सिर्फ? क्योंकि भैया सिर्फ 10% एनर्जी इधर से इधर पास हो रही है, 10% इधर से इधर पास हो रही है, 10% इधर से इधर पास हो रही है, तो यहाँ पे बहुत कम एनर्जी पहुंचती है। ये आपने लर्न कर लेना है कि सिर्फ 4 लेवल हो सकते हैं। डीएफसी पे detritus food chain has no GFC, okay, GFC. Maximum 4 level, T1, T2, T3, T4. Because of limited energy transfer. 10%. such restrictions. No, wrong reference. क्योंकि वो तो हर लेवल पे ही काम कर पाता है ना इसके। कहीं से भी कोई भी मरेगा तो डेट्राइटिस फूड चेन शुरू हो जाएगी। हैज नो सच लेवल्स। आपके एनसीईआरटी में पूछा हुआ है कि क्या डेट्राइटिस फूड चेन पे भी कुछ ऐसा लिमिटेशन है? नहीं है, ग्रेजिंग फूड चेन पे। ठीक है, तो जो begins with the dead organic matter. It is made up of decomposed which are heterophobic or anisotrophic. T2 लेवल। अच्छा, प्राइमरी कंज्यूमर। अच्छा, जैसे ये है, इसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। ठीक है, इसी को हर्बीवोर भी बोलेंगे। हर्बीवोर भी बोलेंगे। ये प्लांट्स है, उनके प्रोड्यूस को खाते हैं। या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कुछ जो कॉमन हर्बीवोर्स आपको मिलते हैं, इंसेक्ट्स, कुछ बर्ड्स, कुछ मैमल्स, और एक्वाटिक इकोसिस्टम में आपको मोलस्क्स मिलते हैं। फिर इनको खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। The consumers that feed on these herbivores are carnivores or primary carnivores. Primary consumers will be herbivores. Primary consumers, herbivores. Common herbivores are insect, birds, mammals. It's like a mollusk and aquatic ecosystem. The consumers that feeds on these herbivores are पता नहीं क्या ही कर सकते हैं। It's okay. क्या पता यार मुझे। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर कर दिया तो अच्छा होता ना। इतने सारे कर लिए तो अच्छा होता तब तो। हम लोगों को बाद में छोड़ देते ना, ये वाला रिपीटेडली करते रहते। उन लोगों में जितना किया है वही रिविजन करते रहते। हाँ, कितना अच्छा होता तब तो। एक अच्छा चांस रहता ना फिर। सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवोर? प्राइमरी।
इनको खाएंगे टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो है प्राइमरी कार्निवोर है, जो टर्शरी कंज्यूमर है वो सेकेंडरी कार्निवोर है। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव लेवल, क्योंकि सिर्फ 10% जा रहा है। नंबर ऑफ क्या कहते हैं लेवल्स इन जीएफसी इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ 10% लॉ। 10% law is only 10% of energy is transferred to the next traffic level from the lower traffic level. In GFC it is possible to have 4 levels. DFC का कोई रूल नहीं है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? हर tertiary consumer, secondary carnivores, tertiary consumer, primary consumer will be herbivores, primary consumer herbivores, okay. Producers on the plant, producers, primary consumers herbivores, secondary consumers carnivores, secondary carnivores, they are consumers, primary carnivores, secondary consumers, tertiary consumers, secondary carnivores as tertiary consumer. Okay. 10% number of trophic level in GFC is restricted because of 10% law. Number of trophic level in GFC is restricted. Number of trophic level is restricted due to 10% law. It's okay, bro. Due to 10% law, okay. 10% law, only 10% of energy is transferred to each trophic level from lower trophic level. Lower trophic level देखिए, higher trophic level में so only 10% energy, okay. And then GFC is okay. DFC does not have any such limit. DFC does not have limit in trophic level. Entropic, TROPH, isotropic level like GFC. ट्रॉफिक लेवल पे टोटल बायोमास एक टाइम पे कितना मिल रहा है इकोसिस्टम में, वो वहाँ की स्टैंडिंग क्रॉप है उस ट्रॉफिक लेवल की। T1 की अलग स्टैंडिंग क्रॉप है, T2 की अलग स्टैंडिंग क्रॉप है, T3 की अलग स्टैंडिंग क्रॉप है, ठीक है। क्रॉप हमेशा जमीन से ऊपर होती है, तो तुम्हें याद रखना लिविंग ऑर्गेनिक मैटर को स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। जो स्टैंडिंग स्टेट होता है वो जमीन के नीचे होता है। जमीन के अंदर कितने मिनरल टू द नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रैफिक लेवल। इन जीएफसी इट इज पॉसिबल टू हैव 4 लेवल्स। डीएफसी का कोई रूल नहीं है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? हर ट्रॉफिक लेवल पे टोटल बायोमास एक टाइम पे कितना मिल रहा है इकोसिस्टम में, वो वहाँ की स्टैंडिंग क्रॉप है उस ट्रॉफिक लेवल की। T1 की अलग स्टैंडिंग क्रॉप है, T2 की अलग स्टैंडिंग क्रॉप है, T3 की अलग स्टैंडिंग क्रॉप है, ठीक है। क्रॉप हमेशा जमीन से ऊपर होती है, तो तुम्हें याद रखना लिविंग ऑर्गेनिक मैटर को स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। जो स्टैंडिंग स्टेट होता है वो जमीन के नीचे होता है। जमीन के अंदर कितने मिनरल्स पड़े हुए हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, वो स्टैंडिंग स्टेट होता है उस टाइम पे इकोसिस्टम का, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप इज ईच ट्रॉफिक लेवल हैज सर्टेन बायोमास एट सर्टेन टाइम कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप each trophic level, हर एक ट्रॉपिक लेवल को माउंट has a certain mass of living matter and living material at a particular time. Standing crop, biomass each trophic level माके just certain mass of living material हुन्छ, biomass certain level of biomass हुन्छ। The number of trophic level increasing, okay, each trophic level has a certain mass of living material. Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time called as standing crop. Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time called as standing crop. Each trophic level has a certain, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हो सकता है शायद। स्टैंडिंग क्रॉप जहिले पनि माथि हुन्छ, जमिनदेखि माथि भनेपछि यसलाई के भन्छ, हरेक ट्रपिक लेभलमा के भन्छ, आफ्नो आफ्नो एउटा सर्टेन टाइममा कति बायोमास छ, टोटल बायोमास, त्यसलाई के भन्छ, स्ट्यान्डिङ क्रप चाहिँ
स्टैंडिंग क्रॉप, मैम ने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, ये ट्रिक मुझे समझ में नहीं। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोमास, और द नंबर ऑफ यूनिट or the number in a unit area. The biomass of a species is expressed in terms of fresh or dry weight. क्यों बोला मैम आपने ऐसा, मुझे समझ में नहीं आया ना। कार्निवोर है, जो टर्शरी कंज्यूमर है वो सेकेंडरी कार्निवोर है। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव लेवल, क्योंकि सिर्फ 10% जा रहा है। नंबर ऑफ क्या कहते हैं लेवल्स इन जीएफसी इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ 10% लॉ। 10% लॉ इज मिनरल्स वो स्टैंडिंग स्टेट होता है उस टाइम पे इकोसिस्टम का, ठीक है। बोलते हैं जो स्टैंडिंग स्टेट होता है वो T1 की अलग स्टैंडिंग क्रॉप है, T2 की अलग स्टैंडिंग क्रॉप है, T3 की अलग स्टैंडिंग क्रॉप है, ठीक है। क्रॉप हमेशा जमीन से ऊपर होती है, तो तुम्हें याद रखना लिविंग ऑर्गेनिक मैटर को स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। जो स्टैंडिंग स्टेट होता है वो जमीन के नीचे होता है। लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, स्टैंडिंग क्रॉप, living material. Okay. Certain mass of living material in a particular time called as a standing crop. The standing crop is measured as the mass of living organism, biomass, or the number in a unit area. Living standing crop. Okay. Standing state is standing state mineral, mineral below soil. पता है जमीन के अंदर कितने मिनरल्स पड़े हुए हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, वो स्टैंडिंग स्टेट होता है उस टाइम पे इकोसिस्टम। Mineral soil सिस्टम का, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप इज ईच ट्रॉपिक लेवल है सर्टेन बायोमास एट सर्टेन टाइम कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। मेजर कैसे मेजर करते हो स्टैंडिंग क्रॉप को, या तो बायोमास से मेजर करते हो या नंबर से भी मेजर कर सकते हो। और जब आप बायोमास में मेजर करोगे स्टैंडिंग क्रॉप को तो हमेशा ड्राई वेट में मेजर करो। ड्राई वेट ज्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू वेट वेट। क्यों? क्योंकि ड्राई वेट वेरी नहीं करता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि व्हाई इज ड्राई वेट अ बेटर मेजर, क्योंकि ड्राई वेट जो है मेरे प्यारे बच्चों वो वेरी कम करता है प्लांट की वॉट। Okay, measurement of biomass in terms of dry weight does not vary. Does not vary much. Does not vary much. वाटर कंटेंट के हिसाब से ड्राई वेट वेरी नहीं करेगा, लेकिन वेट वेट वेरी कर जाएगा। ड्राई और वेट वेट क्या? वेट वेट में से पानी निकालो ड्राई वेट बच जाता है। तो ड्राई वेट इज अ बेटर मेजर ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। Crop. डेट्राइटिस फूड चेन बिगिंस विद डेट्राइटिस। जहां पे भी देखो T1 लेवल या तो आगे एनर्जी पास कर देगा या डेथ होएगी या लिटर गिरेगा। इसमें लिटर क्या होता है? जो उसके पत्ते हैं, डंडियां हैं। तो यहाँ से डीएफसी शुरू हो जाएगा, डीएफसी स्टार्ट हो जाएगा। इवन जो T2 पे जब डेथ होएगी इसकी मान लो, तो इसकी जो डेड बॉडी है यहाँ से डीएफसी स्टार्ट हो जाएगा। तो डीएफसी तो हर लेवल पे चल रहा है, डेट्राइटिस तो हर लेवल पे बन। Liter. Depth. DFC. DFC. गिर गया तो जहाँ पे भी डेट्राइटिस बन रहा है, इवन T3 पे भी डेट्राइटिस बनेगा, तो वहां से डीएफसी शुरू हो जाएगी। इट बिगिंस विद डेट्राइटिस। इट इज मेड अप ऑफ डीकंपोजर्स। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो डीकंपोजर्स होते हैं, मेनली फंजाई और बैक्टीरिया, जिनको हम सेप्रोट्रॉफ भी कहते हैं। अब एक्वाटिक और detritus टेरेस्ट्रियल food chain इकोसिस्टम में begins तुम्हें with the याद detritus. It is made up of decomposers, mainly fungi and bacteria. Mainly fungi and bacteria. Fungi and bacteria. Okay. Nutrient request. करना है, ध्यान से सुनो। There are hundreds of thousands of YouTube videos all about IELTS writing, but here's the problem. They're all saying different things. One guy says use एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल सिस्टम इकोसिस्टम में तुम्हें याद करना है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में जीएफसी बड़ी है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डीएफसी बड़ी है। तुम्हारे पैरों के नीचे इस वक्त एक बहुत बड़ी डीएफसी चल रही है, जमीन के अंदर बहुत बड़ी डीएफसी चल रही है जहाँ डिकम्पोजर्स अपना काम कर रहे हैं। तो तुम्हारे पैरों के नीचे मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डीएफसी इज बिगर, इन एक्वाटिक इकोसिस्टम जीएफसी इज बिगर। तो ये बात आप In aquatic ecosystem, GFC.
grass grazing food chain. Okay. In aquatic ecosystem, in aquatic पानी वाला ecosystem में क्या GFC grazing food chain is a major conduit source for energy flow. Okay. In aquatic GFC is greater than DFC. GFC is greater than DFC. As against this, in terrestrial ecosystem, yogi को थी aquatic ecosystem, much larger fraction of the energy flows through the detritus food chain than through the GFC. Okay, terrestrial में क्या होता है DFC greater होता है GFC बंदा. Okay. ध्यान रखिए. Then DFC is connected with GFC at some levels. ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, मान लो अर्थवर्म है DFC में, तो अर्थवर्म को बर्ड खाते भी तो है, तो भैया ग्रेजिंग फूड चेन के मेंबर्स इसको प्रे की तरह खा भी जाते हैं DFC के मेंबर्स को, इसीलिए फूड वेब बनते हैं. जब बहुत सारी फूड चेन इंटरकनेक्ट हो जाती है तो फूड वेब बन जाते हैं. DFC is connected with GFC at some levels. Some organisms of DFC are prey to GFC animals, which gives rise to food web. बहुत सारी फूड चेन जब इंटरकनेक्ट होंगी तो फूड वेब बन जाएगा. ह्यूमन बींग्स कितने ट्रॉफिक लेवल्स को बिलोंग कर सकते हैं? T1 को तो कर नहीं सकते क्योंकि हम प्रोड्यूसर तो है नहीं. T2 को कर सकते हैं क्योंकि हम हर्बीवोर हो सकते हैं. T3 को कर सकते हैं क्योंकि हम हर्बीवोर को खा सकते हैं. हम T4 पे भी हो सकते हैं क्योंकि हम प्राइमरी कार्निवोर को भी खा सकते हैं. तो हम 3 लेवल पे आ सकते हैं. लास्ट टॉपिक पे चलेंगे हम, इकोलॉजिकल पिरामिड. रेडी हो तुम? इकोलॉजिकल पिरामिड. DFC is connected with GFC at some level. Some organisms of DFC are prey to GFC. DFC and its natural ecosystems animals of course. पढ़ने के लिए क्या आप रेडी हैं इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ने के लिए? बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. चैप्टर खत्म होने वाला भाई. हाँ होने वाला तो है, लेकिन क्या ही कर सकते. फिर कुछ PYQs भी करेंगे. इतनी जल्दी किसे हो रहा है? पिरामिड भी बता ही रही हूँ बेटा. वो पिरामिड बता रही हूँ. जो चैप्टर पढ़ने में तुम खुद से 2 घंटे लगाओगे वो तुम्हारा आधे घंटे में सब कुछ कवर हो जाएगा. सब कुछ कवर हो जाएगा. यहाँ पे आप टेंशन मत लो. भाई ये सब भी हटा दिया है क्या? आ जाओ. हाँ, प्लांट फैमिलीज करा दूंगी बेटा. प्लांट फैमिलीज करा दूंगी. इकोलॉजिकल सक्सेशन है ही नहीं. जो भी इकोलॉजिकल पिरामिड है वो करेंगे. इकोलॉजिकल पिरामिड में जो एक्सेप्शंस हैं वो करेंगे. ठीक है, और फिर हम PYQs करेंगे. चलो, जय माता दी, जय माता दी. चलो शुरू करते हैं. इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है? हमें एक पिरामिडल शेप मिलता है जब भी हम एनर्जी, नंबर या बायोमास का रिलेशनशिप देखेंगे किस किस के बीच में. अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो कि अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे हैं. एनर्जी का भी पिरामिड हो सकता है, बायोमास का भी हो सकता है, नंबर का भी हो सकता है. सबसे नीचे जो आपने लेना है बेस ऑफ पिरामिड वो मुझे T1 का लेना है. उसके ऊपर फिर आपने T2 लेना है, फिर उसके ऊपर आपने T3 लेना है, और फिर लास्ट में आपने T4 लेना है. टर्शरी कंज्यूमर जो है लास्ट में यहाँ पे आ जाए. ठीक है, ये क्या है बेसिकली. अपने एनर्जी का भी पिरामिड ले सकते हो कि किसमें कितनी एनर्जी है, नंबर का भी ले सकते हो और बायोमास का भी ले सकते हो. जनरली पिरामिड्स इस शेप में आपके बनते हैं. जनरली आपके अपराइट पिरामिड बनते हैं.
जनरली अपराइट बनते हैं, एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे। जनरली अपराइट किस किस के बनते हैं? सबके बनते हैं। बायोमास का भी जनरली अपराइट होता है, एनर्जी का भी अपराइट होता है और नंबर का भी अपराइट होता है। एनर्जी का हमेशा ऑलवेज अपराइट रहेगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि 10% लॉ है ना, तो 10% ही एनर्जी जाएगी आगे। ऑलवेज अपराइट है, ये ध्यान रखिए। ये पीवाईक्यू है कि एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज, इसका कभी कभी इन्वर्टेड हो जाता है, इसका भी कभी कभी इन्वर्टेड हो जाता है। पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अपराइट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिखा हुआ है कि 6 मिलियन प्लांट्स होंगे ना आपके पास, 6 मिलियन प्लांट्स, वो जाके ऊपर इस लेवल में सिर्फ 3 टॉप कार्निवोर को सपोर्ट कर पाएगा। अपराइट ऐसे पिरामिड है, तो ये आपने नंबर याद रखना है, 6 मिलियन और 3 वाला, ठीक है। पिरामिड जो है ये वाला याद रखना है। फॉर एनी कैलकुलेशन ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल आर काउंटेड। जब आप ये कैलकुलेशन करो तो ऑल ऑर्गेनिजम्स पे T1 पे सबको काउंट करो, जो T2 पे है ऑल को काउंट करो, T3 पे ऑल को, ये नहीं कि कुछ को छोड़ दिया कुछ को कर दिया आपने। मेरे 24 साल के न्यूमरोलॉजी एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है कि दुनिया में 80% लोग गलत प्रोफेशन में, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल, नॉट अ स्पीशीज। स्पीशीज तो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे भी हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग T1 पे, T2 पे भी हो सकता है, T3 पे भी हो सकता है, T4 पे भी हो सकता है। लेकिन इकोलॉजिकल पिरामिड्स का ये ड्रॉबैक है कि अगर एक स्पीशी एक से ज्यादा लेवल पे है ना, ट्रॉपिक लेवल पे है, तो वो उसको काउंट नहीं कर पाती, वो एक ही लेवल पे काउंट करेगी एक स्पीशीज को। अभी आप ड्रॉबैक्स में पढ़ोगे पिरामिड के, ठीक है। तो एन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल, लेकिन पिरामिड में काउंट नहीं हो पाओगे आप। पिरामिड में आप पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। लेवल, नॉट अ स्पीशीज। स्पीशीज तो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे भी हो सकती है, जैसे ह्यूमन बीइंग T1 पे, T2 पे भी हो सकता है, T3 पे भी। पॉपुलेशन ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी ट्रॉपिक, इसका कभी कभी इन्वर्टेड हो जाता है, इसका भी कभी कभी अपराइट पिरामिड बनते हैं। जनरली अपराइट बनते हैं, एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे। जनरली अपराइट किस किस के बनते हैं? सबके बनते हैं। बायोमास का भी जनरली अपराइट होता है, एनर्जी का भी अपराइट होता है और नंबर का भी अपराइट होता है। एनर्जी का हमेशा ऑलवेज अपराइट रहेगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि 10% लॉ है ना, तो 10% ही एनर्जी जाएगी आगे। ऑलवेज अपराइट है, ये ध्यान रखिए। ये पीवाईक्यू है कि एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज, इसका कभी कभी इन्वर्टेड हो जाता है, इसका भी कभी कभी इन्वर्टेड हो जाता है। पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अपराइट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिखा हुआ है कि 6 मिलियन प्लांट्स होंगे ना आपके पास, 6 मिलियन प्लांट्स, वो जाके ऊपर इस लेवल में सिर्फ 3 टॉप कार्निवोर को सपोर्ट कर पाएगा। अपराइट ऐसे पिरामिड है, तो ये आपने नंबर याद रखना है, 6 मिलियन और 3 वाला, ठीक है। पिरामिड जो है ये वाला याद रखना है। फॉर एनी कैलकुलेशन ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल आर काउंटेड। जब आप ये कैलकुलेशन करो तो ऑल ऑर्गेनिजम्स जो भी टी, तो ये आपने नंबर याद रखना है, 6 मिलियन और 3 वाला, ठीक है। फिर क्योंकि 10% लॉ है ना, तो 10% ही एनर्जी जाएगी आगे। जनरली अपराइट बायोमास एनर्जी, ओके। हाँ, ऑलवेज अपराइट है, ये ध्यान रखना। ये पीवाईक्यू है कि एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज, इसका कभी कभी इन्वर्टेड हो जाता है, इसका भी कभी कभी इन्वर्टेड हो जाता है। पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अपराइट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिखा हुआ है कि 6 मिलियन प्लांट्स होंगे ना आपके पास, 6 मिलियन प्लांट्स, वो जाके ऊपर इस लेवल में सिर्फ 3 टॉप कार्निवोर को सपोर्ट कर पाएगा। अपराइट ऐसे पिरामिड है, तो ये आपने नंबर याद रखना है, 6 मिलियन और 3 वाला, ठीक है। पिरामिड जो है ये वाला याद रखना है। फॉर एनी कैलकुलेशन ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल आर काउंटेड। जब आप ये कैलकुलेशन करो तो ऑल ऑर्गेनिजम्स जो भी T1 पे सबको काउंट करो, जो T2 पे है ऑल को काउंट करो, T3 पे ऑल को, ये नहीं कि कुछ को छोड़ दिया कुछ को काउंट कर दिया आपने। one must remember that the tropic level represents a functional level, not a species as such. A given species may occupy more than one tropic level in the same ecosystem at present. ठीक है। ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल, नॉट अ स्पीशीज। स्पीशीज तो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे भी हो सकती है, जैसे ह्यूमन बीइंग T1 पे, T2 पे भी हो सकता है, T3 पे भी हो सकता है, T4 पे भी हो सकता है। लेकिन इकोलॉजिकल पिरामिड्स का ये ड्रॉबैक है कि अगर एक स्पीशी एक से ज्यादा लेवल पे है ना, ट्रॉपिक लेवल पे है, तो उसको काउंट नहीं कर पाती, वो एक ही लेवल पे काउंट करेगी एक स्पीशीज को। अभी आप ड्रॉबैक्स में पढ़ोगे पिरामिड के, ठीक है। तो एन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल, लेकिन पिरामिड में काउंट नहीं हो पाओगे आप। पिरामिड में आप एक ही ट्रॉपिक लेवल पे काउंट होगे। इन मोस्ट इकोसिस्टम्स ऑल पिरामिड, चाहे वो एनर्जी का हो, नंबर का हो, बायोमास का हो, अपराइट रहता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? पिरामिड ऑफ नंबर एक्सेप्शन है अगर आप एक ट्री इकोसिस्टम की बात करो। पिरामिड ऑफ नंबर एक्सेप्शन है अगर आप एक ट्री इकोसिस्टम की बात करो, एक सिंगल ट्री इकोसिस्टम की बात करो। सब लोग भाग गए, सिर्फ मैं ही बन रही एंड तक। दिस इज रॉन्ग।
सिंगल ट्री इकोसिस्टम, क्योंकि इसमें अगर आप सिर्फ दो एक को ये ले लो, मान लो जैसे एक ट्री है, सिंगल ट्री है, उस पे तो मान लो 10,000 इंसेक्ट्स रह रहे हैं, 10,000 इंसेक्ट्स फीड कर रहे हैं, तो ये तो उल्टा हो गया ना, नंबर की बात करो तो उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड पिरामिड है, इन्वर्टेड पिरामिड। अगर मैं सिर्फ इतना सा लूं, मैं इसको आगे एक्सपैंड भी कर सकती हूँ अगर मैं सिर्फ दो लूं, लेकिन अगर मैं पूरा सिंगल ट्री इकोसिस्टम लूं तो उसमें मैं क्या लूंगी, एक सिंगल ट्री, उस पे इंसेक्ट्स मान लो 10,000 इंसेक्ट्स हैं, 10,000 इंसेक्ट्स हैं, उस पे मान लो 200 बर्ड्स फीड कर रहे हैं, 200 स्मॉल बर्ड फीड कर रहे हैं, और उन 200 स्मॉल बर्ड से मान लो 2 लार्ज बर्ड फीड कर रहे हैं, लार्ज बर्ड फीड कर रहे हैं। तो अगर मैं पूरा लूंगी, अगर मुझे सिंगल ट्री इकोसिस्टम की शेप है तो स्प्रिंगल शेप का बनता है ऐसे। तो आपने क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है। अगर क्वेश्चन पूछता है सिर्फ एक ट्री पे बहुत सारे इंसेक्ट्स की शेप है तो ये इन्वर्टेड है। अगर आपसे बोलता है सिंगल ट्री इकोसिस्टम में कैसा पिरामिड बनेगा, वो स्प्रिंगल शेप, क्योंकि आप बर्ड्स को भी लोगे उसको, आप लोगे ये एक ट्री के ऊपर इतने इंसेक्ट्स हैं, फिर उसके ऊपर इतने बर्ड्स को खा रहे हैं, छोटे थोड़े कम बर्ड्स हैं, 200 बर्ड्स हैं, मान लो फॉर एग्जांपल, फिर मान लो दो बर्ड्स आगे से बड़े-बड़े ईगल छोटे बर्ड्स को खा रहे हैं। तो अगर टोटल पिरामिड देखोगे तो स्प्रिंगल शेप बनेगा, पिरामिड ऑफ नंबर इन सिंगल ट्री इकोसिस्टम। तो आपने क्वेश्चन देखना है, पूरा पिरामिड पूछा हुआ तो स्प्रिंगल शेप बनेगा, दो का पूछा हुआ तो ये बनेगा पिरामिड। पहले एक्सेप्शन समझ में आ गया? In the above example, if we count number of insect feeding on a big tree, we get an inverted pyramid. Count the number of insects feeding big tree. English. English. दूसरा, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी हमेशा इन्वर्टेड रहता है, ठीक है। जो हम Pyramid of biomass in sea. Generally बोला है, हमेशा नहीं, generally inverted because of biomass of fish far exceeds the phytoplanktons. हमारे प्रोड्यूसर्स हैं सी में, फाइटोप्लैंक्टन वो सबसे कम होते हैं, उसके ऊपर जूप्लैंक्टन काफी ज्यादा, फिर उसके ऊपर स्मॉल फिश होती है, फिर उसके ऊपर लार्ज फिश होती है। एनसीईआरटी में स्मॉल फिश लार्ज फिश है, एनसीईआरटी में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन लिखा हुआ है। हमेशा उल्टा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट अ लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन विच सपोर्ट्स इवन लार्जर स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फिश। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि क्या ये पैराडॉक्स नहीं है? पैराडॉक्स क्या होता है, जो नहीं होना चाहिए क्या ऐसा हो रहा है? क्या ये अनहोनी नहीं है? क्योंकि बायोमास का पिरामिड तो सीधा होना चाहिए, क्योंकि लेस क्रॉपिंग लेवल पे कम बायोमास जा रहा है। यस, इट इज अ पैराडॉक्स। आंसर है उस क्वेश्चन का, इट इज अ पैराडॉक्स, इसे हम बायोमास पैराडॉक्स कहते हैं। इस Strange. Biomass paradox. पैराडॉक्स के रीजंस क्या हैं? जो फाइटोप्लैंक्टन है वो बहुत छोटे माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हैं, तो बायोमास से कंट्री Java? What's that? क्या लिख रहे हो तुम? जो फिश है वो काफी बड़ा ऑर्गेनिज्म है, तो एक फिश में काफी ज्यादा बायोमास होता है, इसलिए अगर टोटल फिश का वेट देखें टाइम पे फाइटोप्लैंक्टन का वेट बहुत कम आता है।
फाइटोप्लैंक्टन का वेट बहुत कम आता है। देन फाइटोप्लैंक्टन की बहुत ही रैपिड रिप्रोडक्शन है, तो वो जल्दी वेट देखें टाइम पर फाइटोप्लैंक्टन का देखें तो फाइटोप्लैंक्टन का वेट बहुत कम आता है। देन फाइटोप्लैंक्टन की बहुत ही रैपिड रिप्रोडक्शन है, तो वो जल्दी जल्दी Reason for biomass paradox in sea. Phytoplanktons are minor organism. अच्छा ठीक है। बायोमास होता है, इसलिए अगर हम टोटल बहुत छोटू माइन्यूट ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर लार्ज फिश होती है, जू प्लैंक्टन विच सपोर्ट देखें टाइम पर फाइटोप्लैंक्टन होनी नहीं है, क्योंकि बायोमास का पिरामिड तो सीधा होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कम बायोमास जाए। यस इट इज अ पैराडॉक्स, आंसर है उस क्वेश्चन का, इट इज अ पैराडॉक्स, इसे हम बायोमास पैराडॉक्स कहते हैं। इस पैराडॉक्स के रीजंस क्या है? जो फाइटोप्लैंक्टन है वो बहुत छोटू माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है, तो बायोमास में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जो फिश है वो काफी बड़ा ऑर्गेनिज्म है, तो एक फिश में ही काफी सारा बायोमास होता है, इसलिए अगर हम टोटल फिश का वेट देखें टाइम पर फाइटोप्लैंक्टन का देखें तो फाइटोप्लैंक्टन का वेट बहुत कम आता है। देन फाइटोप्लैंक्टन की बहुत ही रैपिड रिप्रोडक्शन है, तो वो जल्दी बच्चे पैदा करते रहते, नए फाइटोप्लैंक्टन आते थे, उनको जल्दी जल्दी खा के अगले ट्रॉपिक लेवल्स अपना बायोमास बढ़ाते रहते हैं, तो खुद फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास बहुत कम रहता है किसी भी गिवन टाइम पे। तो ये रीजंस है पैराडॉक्स के। फाइटोप्लैंक्टन्स आर माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स, तो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, रैपिड रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, देयर बायोमास इज कांस्टेंटली बीइंग कंज्यूम्ड बाय ग्रेजर्स। जो खाने वाले लोग हैं वो बहुत जल्दी फाइटोप्लैंक्टन खाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जल्दी अपना बायोमास फिर और बढ़ाते भी रहते हैं। Then biomass is also related to longevity of an organism. फिश का लाइफ स्पैन थोड़ा ज्यादा है, फाइटोप्लैंक्टन का कोई लाइफ स्पैन ही नहीं है, तो जितना लॉन्गर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उतना ही ज्यादा बायोमास में कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए हमें इन्वर्टेड पिरामिड मिलता है सी में बायोमास का। ध्यान रखना है, पैराडॉक्स है ये, बायोमास पैराडॉक्स है। Reason for biomass paradox. Reason. Phytoplanktons are minute organism. Phytoplankton. Organisms. Rapid reproduction and growth of phytoplanktons. Rapid reproduction and growth. Their biomass is constantly being consumed by grazers. Consumed by grazers. Grazers. Biomass is also related to longevity of an organism. longevity or longevity, whatever it is. Longevity, of organism. Pyramid of energy is always upright because some energy is always lost as heat at the each step. Pyramids खत्म, आपको सब कुछ आता है पिरामिड्स में, जो भी आपको चाहिए, सिर्फ दो एक्सेप्शंस है, पिरामिड ऑफ नंबर इन अ सिंगल ट्री इकोसिस्टम एंड पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, ये दो एक्सेप्शंस हैं। ये दो टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी से कटे हुए हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, लेकिन आपके समरी में दिए हैं, तो जो समरी में दिए हुए हैं वो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स आपको समराइज कर। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड इकोसिस्टम, अच्छा the same species belonging to two or more trophic level. Assume a simple food chain does not accommodate food wave. Are not included. Saprophytes, storage and movement of nutrient elements through various components of the system. Limitations of ecological pyramids क्या है? Do not take it into account the same species belonging to two or more trophic levels. अगर दो trophic levels पे तो सिर्फ एक पे काउंट करेगा पिरामिड। Then presume a simple food chain। भैया food chain तो एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में, फूड वेब एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप जब पिरामिड बनाते हो तो आप सिंपल फूड चेन को मानते हो, एंड सेप्रोफाइट्स को आपने कोई जगह नहीं दी। भैया डीएफसी इतना बड़ा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, डीएफसी इज बिगर देन जीएफसी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, आपने कोई जगह नहीं दी सेप्रोट्रॉप्स को। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, ये एक ही पॉइंट है बेसिकली, ये एक ही पॉइंट है, तो 3 पॉइंट्स है, 3 ड्रॉबैक्स हैं।
न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है? स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। और ये हमेशा साइकिल होता है न्यूट्रिएंट साइकिल, ये यूनिडायरेक्शनल थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इको। ज्यूम अ सिंपल फूड चेन। भैया फूड चेन तो एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में, फूड वेब एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप जब पिरामिड बनाते हो तो आप सिंपल फूड चेन को मानते हो। एंड सेप्रोफाइट्स को आपने कोई जगह नहीं दी भैया। डीएफसी इतना बड़ा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, डीएफसी इज बिगर देन जीएफसी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, आपने कोई जगह नहीं दी सेप्रोफाइट्स को। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, ये एक ही पॉइंट है बेसिकली, ये एक ही पॉइंट है, तो 3 पॉइंट्स है, 3 ड्रॉबैक्स हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है? स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। और ये हमेशा साइकिल होता है न्यूट्रिएंट साइकिल, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है। न्यूट्रिएंट्स यहाँ से चलेंगे वापस यहीं पे ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, 2 प्रकार की न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, गैशियस और सेडिमेंट्री। जिसका रेजर्वोयर एटमॉस्फेयर में हो वो गैशियस साइकिल है, जिसका रेजर्वोयर अर्थ क्रस्ट में हो वो सेडिमेंट्री साइकिल है। एटमॉस्फेरिक या गैशियस साइकिल का एग्जांपल कार्बन है और सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल आपका फास्फोरस है। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है? इकोसिस्टम हमें क्या सर्विसेज देता है? जैसे कि हमारा हवा और पानी साफ करना, उसको इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक पूरा का पूरा भी एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ आपको डेफिनेशन दी हुई है और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को चैप्टर पढ़ के? आओ क्वेश्चंस करेंगे। 2023 का क्वेश्चन है, आओ देखें। Identify the correct statement. Detritivores performing fragmentation. The humus is further degraded by some microbes during mineralization. I सके तो कर सकती है माँ. Identify the correct statement. Detritivores perform fragmentation. The humus is further degraded by some microbes during mineralization, correct? Water soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by a. No, this leaching is not correct. It is leaching. हाँ सही तो है. Precipitated by a something. Detritus food chain begins with living organism. Detritus food chain begins with living organism. Na. D is false. Earthworm breaks down detritus into smaller particles. This is called catabolism. Detritivores perform fragmentation. थोड़ी कैटाबोलिज्म थोड़ी बोलते हैं उसे फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। कैटाबोलिज्म तो जब ये फ्रेगमेंटेड डेट्रिटस को सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करे तो। Words like earthworms perform fragmentation. Humus is further degraded by some microbes during mineralization. ये भी सही है. Water soluble inorganic nutrients go down into soil and get precipitated by process called leaching. ये भी सही है. Detritus food chain begins with living organisms. So it begins with detritus. Earthworm break down detritus into small particles by process called catabolism. No, by process called fragmentation. Fragmentation होना चाहिए. तो आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है. तो आपका A, B, C करेक्ट होना चाहिए. इससे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. इसका नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे. इसका नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे. आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है. ऋतु रतेवाल बायोलॉजी करके 1,20,000 बच्चों का चैनल है, वहां आपको ज्वाइन करना है. ठीक है, मैं इस बार नीट देने वाली हूँ या नहीं बताती हूँ बेटा. इन इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एमपीपी. जीपीपी इज ये, एमपीपी इज ये. आर रहा है in the equation GPP minus R equals to MPP. Gross primary productivity is gross primary productivity. Neat primary is R. Here is respiratory quotient. हाँ ये तो मैंने गलत करके आई थी मैं. Respiratory loss होता है ना, मैंने respiratory quotient कर दिया. Respiratory loss था. ये मैंने तो गलत किया था. पहले पढ़े हुए हैं तो एक बार रिवीजन कर जाना. अगर नहीं पढ़ा तो मत पढ़ो. हाँ 2023 रेस्पिरेटरी लॉस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से डिकम्पोजिशन पे. Given below are the two statements. Statement 1. Decomposition is a process in which the wow जो मैंने गलत किया अब मुझे याद आ रहा है. Decomposition is a process in which that was the best. Decomposition is a process in which हाँ वो सबसे बेस्ट रहेगा. I know उससे बेस्ट तो नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा. Statement 1. Decomposition is a process in which the detritus is degraded into simpler substances by microbes. Microbes नहीं, earthworm से होता है ना. Decomposition is faster if the earthworm को थोड़ी microbes बोलते हैं यार. Decomposition is faster in the detritus. Decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and chitin. Wrong. In the light of the both statement 1 and 2 are incorrect. Decomposition is a process in which detritus is degraded into simple substances by microbes. सही है ये. Decomposition is faster if detritus is rich in lignin. नहीं, अगर ये lignin chitin नहीं हो
माइक्रोब्स कहाँ है? माइक्रोब्स नहीं है यार, क्या कर रही है? देखो तो यहाँ पर कहाँ, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन कंट्रोल कैन, कहाँ गया? Yeah, break down detritus into smaller particles. Decomposition of is a process in which detritus is degraded into simpler substances by microbes. Detritus, लगभग detritus example earthworm. Break down detritus into smaller particles. This process is called fragmentation. Smaller particles. Fragmentation. इसमें तो ये नहीं पूछा है ना कि ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस है कि नहीं. Detritus by into simpler substances by microbes. हाँ, first one is correct. इन लाइट ऑफ ये तो पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत. ठीक है जी. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट phosphorus cycle. आई ये तो पढ़ा ही नहीं. Which of the following accelerate phosphorus cycle? Burning of fossil fuel. फॉस्फोरस साइकिल अभी है नहीं आपके उसमें, लेकिन फॉस्फोरस साइकिल का जो रिजर्वायर होता है वो होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स में फॉस्फोरस होता है. तो जितना रॉक्स वेदर करेगा उतना ज्यादा फॉस्फोरस जो है सॉइल में आके मिलेगा. डेट्राइटिव और ब्रेक डाउन Detritivores break down detritus into smaller particles. This process is called detritivores break down detritus into smaller particles. Detritivores break down detritus into smaller particles. This process is called catabolism, fragmentation, humification, decomposition. Detritivores. Smaller particles बोल रहा है ना, तो ये fragmentation हुआ. स्मॉलर पार्टिकल्स इसको कहते हैं. उसमें पूरा बड़े पार्टिकल का देखो इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल की थोड़ा सा स्मॉलर पार्टिकल बोल रहा है. मतलब फिजिकल ब्रेकडाउन हमारा पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन है ये. ठीक है जी. चलिए आप समझ जाओ कि भैया अगर ये 45 पॉइंट्स आपने अच्छे से कर लिए तो आपके 2024 के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे. आई होप आपको 40 मिनट में चैप्टर करके मजा आया होगा. 5 मिनट में लेट गया कि 35 मिनट में चैप्टर कंप्लीट करके पीवाईक्यू से आपको मजा आएगा. प्लीज मुझे अपना रिव्यू जरूर देना. आपको कैसा लगा चैप्टर पढ़ के प्लीज मुझे बताना. और कोई और सजेशन हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए. बाय बाय, अभी मैं जाऊंगी. यूपीएससी नहीं, गौरव.